Namaskar. Once again, welcome to each one of you in this fourth day of GST Mahakumbh, where we are discussing GST industry-wise and various topic has been discussed. Welcome Taranji once again on this channel, King Kasa. Thank you. And today's important topic is work contract, educational services, health and CSR activities to be taken up by CA Tarun Arora ji. Our co-panelists Asha Sharma ji and Thani sir is also here. So they will also take up the questions and discussion move forward. Before inviting Tarun ji, I would like to brief about him. Tarun Arora ji is a qualified CA and commerce graduate, dedicated GST student since 2015. Before starting of the GST Act, he has conducted more than 600 seminar webinar at the forum like ICI, GST course, CP chapters, branches, study circles, etc. And known for his ability to simplify complex GST topics, regularly represent client before tax authority across India, and he has served as a consultant on the panel of the various listed company as well as the large Indian and MNC organizations. And Tarunji also delivered various sessions on this CASA platform since many years. So I know his goodwill and knowledge. And earlier three sessions we have shared entire recording and presentation on the CASA channel. So you can take up from there. एंड कोई और क्वेरी हो आप लोगों की किसी की भी किसी से रिलेटेड आफ्टर द टॉपिक लास्ट 15 मिनट्स वी विल ट्राई टू कवर द टॉपिक जो भी आप लोगों के कोई क्वेरी हो सो विल ट्राई टू टेक अप नाउ ओवर टू यू तरुण भाई फॉर योर डेलीब्रेशन. Thank you, Sumit ji. Before starting the session, I would congratulate and thanks Tasa to give me this opportunity to share my thoughts on the topic and very different topic, basically works contract. Suddenly from works contract, we will move to education. From education, we will move to health and then finally to CSR. Yes, So sir. this would be the index of our discussion today. We would be discussing four topics. Now, without wasting any further time, I'm sharing my screen and we will start the deliberation. Sure. I hope my screen is visible. Yes, sir. Perfect. Thank you. So as already discussed, we would be having four topics to be discussed today: works contract, education, healthcare, and CSR activities. Starting on with the first topic of our today's discussion, works contract. So in works contract, there are many things which need to be understood. So basically, we have a sub agenda for this particular item. We will understand what is the meaning of subcontract, what is the classification, what are the specific accounting and record requirement for works contract, what are the invoicing criteria, what is the status of input tax credit, how to determine a place of supply in case of works contract, what are the applicable rate of taxes and other issues. Starting on with the first issue, meaning. So the term works contract is defined in the law in section 2, subsection 119. So the term is already defined. The term is defined in the act. It says a contract for building or construction, fabrication or completion, erection, installation, fitting out, improvement, modification, repair, maintenance, renovation, alteration, or commissioning. These are 14 different type of services that have been identified in the definition itself. यानी contract की definition, a contract for any of these 14 services, इन 14 में से कोई भी एक services की अगर हम बात कर रहे हैं, with the condition that these are done on an involved property. That is a contract for construction of an involved property, repair of an involved property, renovation of an involved property. Any immoral property, we will refer it to as works contract. The another important aspect is this service
should also accompany transfer of property in goods, whether as goods or in some other form in the execution of the contract. So, in simple words, that there has to be a service, and during the provision of that service, there should be a immovable property which is existing, and there should also be certain goods, the ownership of which is transferring to the contracting. यानी मेरे पास कंस्ट्रक्शन का काम आया तो मेरे को बिल्डिंग खड़ी करनी है, मैंने लेबर दी और मैंने सीमेंट स्टील भी दिया। सीमेंट स्टील मैंने डायरेक्टली नहीं दिया, सीमेंट स्टील की मैंने दीवार बना के दी, सो इट इज इन सम अदर फॉर्म। तो मैंने किसी भी फॉर्म में जब मैं गुड्स की प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता हूं तो इट क्वालिफाई द वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। द इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ओवर हियर इज दैट इट इज स्पेसिफिकली फॉर एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल दैट, जस्ट वन मिनट, that you need a dining table and you called a carpenter. So the carpenter said, okay, he will do the activity. He will provide the goods as well as services. यानी मटेरियल भी वही लेके आएगा, सर्विसेज भी वही देगा, एंड ही विल क्रिएट अ डाइनिंग टेबल फॉर यू एंड ही विल चार्ज 30,000 रुपीज। द इश्यू इज whether this contract is qualifying as a works contract or not. Whether the services provided by the carpenter will qualify as works contract or not. The answer to it would be no, because dining table will not become an immovable property. It is a movable property, and one of the most important condition of works contract was that the construction or the activity should be in relation to an immovable property. In this case, it is in relation to a movable property, so it will not qualify as a works contract. So now the important thing comes up is what is the meaning of immovable property? Because I'm stressing upon immovable property so much, so there should be some meaning assigned to it so that we are able to comprehend, okay, this is immovable property and works contract has to be read only in accordance with this immovable property. यानी पहले ये पता चल जाए immovable property होती क्या है, और जब भी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की बात होगी तो आई नो दैट दिस इज द टर्म जिसके इर्द गिर्द आई हैव टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। The first thing is that the term is not defined in the GST Act. तो आपको सेक्शन 2 में इसकी कोई वर्डिंग या डेफिनेशन नहीं मिलेगी। So what do we do now? We go to the General Clauses Act 1897, which says that immovable property shall include. So again, even in the General Clauses Act, it is not a specific definition. It says that immovable property shall include land. So एक basic meaning immovable property का तो उन्होंने inherit कर लिया, and then they have specifically included lands, benefits to arise out of lands, and things attached to the earth or permanently fastened to anything attached to the earth. यानी land हो गई, बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड हो गया, या कोई भी चीज जो अर्थ के साथ अटैच कर दी गई, या एनीथिंग विच इज फास्टन टू द अर्थ, वो सारी मेरी इमोल प्रॉपर्टी बन जाती है। A similar definition is also provided in the Registration Act 1908. So I'm reading the green portion, includes land, other benefits to arise out of land, things attached to earth, permanently fastened to anything which is attached to earth, but does not include growing crops, timbers, etc. Yani if you see that the definition of General Clauses Act is almost equivalent to the Registration Act. Now I am reading the first two bullets of the Registration Act. Includes land, building, hereditary allowances, right to ways, lights, ferries, fisheries, or any other things, benefits arising out of land. So in simple words, जो हमारी एक अंडरस्टैंडिंग जाती है कि एक चीज जो परमानेंटली अर्थ के साथ एग्जिस्ट करती है, जिसको मैं रिमूव नहीं कर सकता हूं विदाउट डिस्ट्रक्टिंग इट, वो सारी इमोरल प्रॉपर्टी बन जाती है। And if I am getting any benefit out of that land, then it is also referred to as immovable property. आप जब जनरल क्लॉजेज एक्ट में पढ़ते हैं, उसके अंदर स्पेसिफिकली बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड एंड थिंग्स अटैच टू द अर्थ, तो जो क्रॉप्स वगैरह होते हैं वो भी इमोरल प्रॉपर्टी बन रहे हैं अनटिल एंड अनलेस दे आर सेवियर्ड, जब तक उनको अलग नहीं किया जाता है। बट इन द रजिस्ट्रेशन एक्ट उन्होंने उसको रिमूव कर दिया है। तो अगेन, इसको बहुत टेक्निकल्स में नहीं जाते, जो नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है इमोरल प्रॉपर्टी की, इफ यू विल कीप दैट इन माइंड, वी विल be able to comprehend the provisions better. But these are the two definitions on which you can rely on. So
What is the taxability of immovable property under GST? So as per Schedule 3 deals with activities or transaction which shall neither be treated as supply of goods nor supply of services. यानी जीएसटी में टैक्सेबिलिटी की बात कब करेंगे, जब वो सप्लाई ऑफ गुड्स होगा या सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगा. शेड्यूल 3 स्पेसिफिकली कवर्स दोज आइटम्स विच आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज. उसमें पैरा नंबर 5 इट इज स्पेसिफिकली स्टेटेड दैट सेल ऑफ लैंड and subject to clause B of para 5 of schedule 2, sale of building. इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सेल ऑफ लैंड एंड लास्ट के वर्ड्स पढ़ते हैं सेल ऑफ बिल्डिंग. दीज आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी एंड सेल ऑफ बिल्डिंग इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी इफ इट इज सोल्ड आफ्टर कंस्ट्रक्शन. यानी एक रियल एस्टेट डेवलपर अगर ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन सेल करता है देन इट विल बी कवर्ड इन द टैक्सेबिलिटी. लैंड तब भी नहीं होती, उसकी आपको एग्जेम्पशन मिलती है 33% की, लेकिन जो आपकी बिल्डिंग है वो हमेशा टैक्सेबल रहती है कंस्ट्रक्शन की फेज के अंदर. आफ्टर कंस्ट्रक्शन लैंड एंड बिल्डिंग इफ यू आर सेलिंग इट इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी. नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज that immovable property is a very wide term and land and building are very small subset of this entire immovable property. और जीएसटी के अंदर दे हैव रिस्ट्रिक्टेड द इमूवेबल प्रॉपर्टी बेनिफिट ओनली टू लैंड एंड बिल्डिंग एंड फॉर ऑल अदर थिंग्स देयर मे बी अ सिचुएशन व्हेन दीज वुड बी चार्जेबल टू टैक्स. तो दिस शुड बी टेकन वेरी elaborately that even though immovable property is very wide, but exemption under GST, I should not use the word exemption. The exclusion from GST is only for sale of land and building if it is completed and it is being sold after construction. Uh, Another thing, after closing works contract, we will take a 5 minute session or we will discuss the Q&A of works contract, because at the end it would be very difficult to take the Q&A of all the 4 topics. Illustration number 2. So Ram has to get a building construction. So he hires a labor contractor. He says that goods to main khud le aaunga, cement, steel, bricks, I will bring on myself. But I only need a labor contractor. So that labor contractor will help him get the labor and get the building constructed. Whether these services of labor would qualify as works contract. I am repeating my illustration again. Ram is the person who intends to get a building constructed. For that construction, he hires a labor contractor who will only supply labor for construction purposes. Material will be brought, purchased by Ram directly. तो राम माल खुद खरीदेगा, लेबर कॉन्ट्रैक्टर एक लेबर के लिए उसने कॉन्ट्रैक्टर को हायर कर लिया. The simple issue is whether this contractor will qualify as a works contract service provider or not. So if we go to the definition, there were 3 important things. There has to be construction service. Yes. Out there were 14 services. So whether there is any service out of those 14, yes, construction. Okay. What is the second thing? Immovable property. Yes, the construction is of an immovable property. Thirdly, whether that labor contractor is providing any ownership or transfer of any ownership of any goods, whether in the same form or in some other form. So answer is no. Even if the labor contractor is using some goods, for example, the axe or anything else, those are being used to provide the services. उसकी ownership Mr. Ram के पास नहीं जा रही है. So those are equipment to provide the services, but the ownership of which will never transfer to Mr. Ram. It might be possible that it is completely exhausted during that stage. Even then, these are not transferred to Mr. Ram, so they will never qualify as works contract services. वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर में ही रह जाएगा. The second issue is the nature and classification of works contract. Under GST, we all know that the supply is either referred to as goods or as services. Works contract, what we have understood is that it has some ingredient of services and some ingredients of goods. यानी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में गुड्स के भी इंग्रेडिएंट्स है, सर्विसेज के भी इंग्रेडिएंट्स है. तो व्हाट शुड बी द क्लासिफिकेशन? And why it is important? Because the time of supply, place of supply, and which notification to be read. Whether rate notification of goods has to be read or rate notification of services. So it is important for us to classify the service. So works contract is includes both goods and services.
So when we read the entire law, we also have a concept called composite and mixed supply. So works contract is referred to as a composite supply in Schedule 2. And in Schedule 2, they have specifically stated that the composite supply in the nature of works contract will be treated as supply of services. आपके 90 रुपीज के गुड्स लग रहे हैं, 10 रुपए 10% की सर्विसेज है, irrespective of that, the transaction will be deemed to be as supply of services. So three things: works contract is equivalent to a composite supply, which is equal to a supply of services. So this is how this entire classification is derived from Schedule 2 and the concept of composite supply. I'm not getting into the integrities of composite supply. What is a composite supply? The simple thing is, if the supply of goods and supply of services are naturally bundled, so we refer it to as a composite supply. The SAC codes used are from 9941 to 9947. So these are the SACs. Now we also have sub SACs. इनके नीचे भी एक line item आती है which has to be referred and understood. Another important thing that comes before us is, what is the difference between works contract and a real estate contract? So the difference between the two is the land value. Works contract means I am not transferring the ownership of land to you. In real estate, it is also expected that the land will also be transferred to the person. So land is the distinguishing factor, and because of that land, everything changes and the entire transaction nature changes altogether. The third issue in account works contract is the accounts and records that have to be maintained. So we all know that in section 35, the government has specifically stated that what are the records that have to be maintained. So they are very simple. What you have purchased, जो आपने परचेज किया, what have you manufactured out of that, जो आपने मैन्युफैक्चर कर लिया उसमें से how much you have sold, how much is lying in your stock, जो आपने परचेज किया था उस पे इनपुट कितना, जो आपने सेल किया उस पे आउटपुट कितना, एंड फाइनली हाउ मच टैक्स यू आर पेइंग थ्रू कैश लेजर एंड क्रेडिट लेजर. सो मैंने परचेज क्या किया, उससे बनाया क्या, कितना सेल कर दिया, कितना स्टॉक में है, एंड फाइनली व्हाट इज द आईटीसी, आउटपुट टैक्स पेबल, and the amount that I will be paying through credit ledger and cash ledger. These are the records that have to be maintained as per section 35, or the accounts that have to be maintained. But when we go to the rules, specifically rule 56, sub rule 14, it says that every registered person executing works contract shall keep separate accounts for contracts showing the name and address of the person on whose behalf the work contract is executed, description, value, and quantity wherever applicable of goods or services received for the execution of works contract, description, value, and quantity wherever applicable of goods and services utilized, the details of payment received in respect of such works contract, the name of the supplier from whom they have received the goods. In simple words, I will have to do a contract level accounting. मैं किसका काम कर रहा हूं, मैंने कितने गुड्स उसके लिए रिसीव कर लिए, कितने यूटिलाइज कर लिए, कितनी पेमेंट रिसीव कर ली, और मैंने परचेज किससे कर रहा हूं. ऑल दीज रिकॉर्ड्स हैव टू बी मेंटेन्ड फॉर ईच कॉन्ट्रैक्ट सेपरेटली. Yani works contract level, if I have 10 contracts, then I should be able to give these details for the 10 contracts separately. And if I do not do this, it means that I am not complying with the provisions of sub rule 14 of rule 56. So this is another important thing that you need to be very sure that your client, and if you yourself is a work contract provider, then you are maintaining these accounts separately. Now, how to issue invoice in case of works contract? See, we all understand that works contract is a continuous supply of services. जब continuous supply of services है, तो there have to be some bifurcation, some identification points that इस point के ऊपर I will issue the invoice. So, if we say that there is a contract in which the payment obligation is 10% on signing of the contract, 20% on first floor, 20% on third floor, and 50% on the completion of the building, then all these milestones
will become the point at which the invoice has to be issued. So the specific provision is section 31, subsection 5, which says that if the due date can be ascertained from a contract, then the invoice has to be issued prior to the invoice or the date of receipt of payment, whichever is earlier. If you are unable to identify the date of payment, the due date of payment, then the invoice shall be issued on or before the date of receipt of payment. And if the payment is linked with an event, एक destination, एक point से linked है, for example, at the construction of first floor, second floor, third floor, so that point will be deemed to be your uh, time of supply, और उसके basis पे you will have to issue the invoice. So at the time of completion or before that you can issue the invoice. So in simple words, if the due date is ascertainable, then before that due date. If the point or any specific situation is identifiable, then before that point you will have to issue the invoice in case of works contract. Input tax credit. So the biggest problem with works contract is not by the persons who are supplying the works contract services. Rather, if you are getting a works contract services done at your end, you are a supplier and you are availing the services of a works contractor. Now the issue arises whether you are eligible for those ITCs or not. So in the same nature of business, I am a works contractor, I am subcontracting a part of my contract to another subcontractor. उसके अंदर chain valid रहेगी, I would be eligible for credit. But in all other cases, I have to see the eligibility in terms of section 17.5C and section 17.5D. If we see section 17.5C, it says that works contract services when supplied for construction of an immovable property other than plant and machinery, except where it is an input service for further supply of works contract services. So now there are three bullets which I have identified. So it starts with I am reading the red portion from the beginning, section 17.5. Input tax credit shall not be available in respect of the following, namely, when supplied for construction of an immovable property. यानी पहला बुलेट क्या बोल रहा है कि दैट इफ यू आर कंस्ट्रक्टिंग एन इमोवल प्रॉपर्टी देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी आईटीसी. In the second bullet, it says that except other than plant and machinery. So even if you are constructing an immovable property, but that immovable property qualifies as a plant and machinery, then the credit is eligible. So मैंने एक works contract किया. After completing the works contract, I saw that there is a immovable property, but that immovable property is per se a plant and machinery. For example, a dry dock. So dry dock is a place which is made up of steel, cement, and everything, but it acts as a machinery. It goes in the sea. It ensures that the containers are brought into it, and it is able to complete the entire process. That is, even though it is constructed as an immovable property, but it is functioning as plant and machinery, then the credit is eligible. And the third situation is if you are taking it as an inward supply to resupply works contract services, in simple words, subcontracting, then also the credit of works contract is eligible. So, immovable property other than plant and machinery is the only restriction. What is the meaning of plant and machinery? We will understand it in the next slide. Similarly, in clause B, there is a similar thing which says that goods or services or both received by a taxable person for construction of an immovable property other than plant and machinery. So here also earlier it was plant or machinery basis which the Safari Retreat judgment was introduced, which was nullified by way of an retrospective amendment. So I will try to discuss that in the second phase of our discussion. So whether you are giving a consolidated works contract wherein goods and services are procured by the contractor and then the construction is done, or you are splitting the contract, you are saying goods I will bring, services ke liye I hire a subcontractor. Either way, if the end result is construction of an immovable property, then the credit is not eligible to you. This is the context, this is the summary of this entire provision. But it is important to understand that there is a term construction and there is a term plant and machinery.
Both these terms need to be understood before concluding that when the ITC is eligible and when the ITC is not eligible. The term construction is defined in section 17.5 itself by way of a explanation. यानी 17.5 के अंदर ही explanation दे रखी है where they have defined construction as inclusion of reconstruction, renovation, additions, alteration, repairs to the extent of capitalization to the said immovable property. So if we remember that in works contract, there were 14 different terms which were used. वहां पे 14 terms use हुई थी. Here, they have used one of those 14 terms, construction, and have included some of the 14 items within the same subset. यानी वहां पे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में 14 डिफरेंट टर्म्स थी, यहाँ कंस्ट्रक्शन लिया और कंस्ट्रक्शन के अंदर उन्होंने कुछ आइटम्स को इंक्लूड कर दिया, बट हैव नॉट इंक्लूडेड ऑल द सर्विसेज. एंड द अदर इंपॉर्टेंट पार्ट इज सेक्शन 17.5C के लिए जो कंस्ट्रक्शन है, इट हैज टू बी रेड विद द लिमिटेड एस्पेक्ट which is capitalized to the said immovable property. If the expenditure incurred by the supplier or the taxpayer is capitalized, then only it will qualify as works contract services, or it will qualify as construction of an immovable property for the purposes of disallowing the ITC. यानी ITC कब disallow होगा? जब वो capitalize होगा. If the amount is being written off through P&L account, that it is being expensed out, then the credit is eligible. Now, whether the expense has to be capitalized or it has to be written off through the P&L account or the income and expenditure account depends upon the accounting standards applicable or the relevant accounting standard. So, if the life of immovable property is enhancing, then definitely it will go beyond. It will not be prudent to pass those expenditures as a revenue expenditure. It should be capitalized. But again, you will have to see the accounting standard and decide whether it is to be capitalized or not. तो कंस्ट्रक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं, कंक्लूड करते हैं कि कोई भी कंस्ट्रक्शन अगर कैपिटलाइज हो रही है तो 17.5 ट्रिगर होगा. इफ नॉट, देन 17.5 इज नॉट एप्लीकेबल एंड द आईटीसी इज एलिजिबल. नाउ द सेकंड टर्म वाज जहां पे बेनिफिट अवेलेबल है, यू विल बी एलिजिबल फॉर द बेनिफिट. इट इज प्लांट एंड मशीनरी. I am reading it verbatim, and I would request everyone to read it verbatim and focus on the red portion when we reach there. For the purposes of this chapter and chapter 6, the expression plant and machinery means apparatus, equipment, and machinery fixed to earth by foundation or structure support that are used for making an outward supply of goods or services or both, and include such foundation and structure support but excludes. अभी मैं exclusion को छोड़ के ऊपर वाले पे रुकता हूँ. So plant and machinery specifically include three things: apparatus, equipment, machinery. But these apparatus, equipment, and machinery should be used for making outward supply of goods or services. These should be used for making outward supply of goods or services. So there are two different things. One is using a machinery for business purposes. Second is using a machinery for making an outward supply. बिजनेस के लिए इस्तेमाल करना, आउटवर्ड सप्लाई को सेल बोल दो, बिकॉज सप्लाई इंक्लूड सेल. बिजनेस के लिए यूज करना और सेल के लिए यूज करना आर टू डिफरेंट टर्म्स, टू डिफरेंट स्कोप. For business, it is a very wide term. Using anything for business would be very wide term. For example, an air conditioner installed in a say far off location, which R&D point, so R&D may be classified, but something which is beyond this, which has no relevance with the sale of goods, वो भी cover हो जाएगा. But qualify the construction is of an immovable property. We are reading section 17.5. It means कि immovable property है. Immovable property in the form of plant and machinery भी है. Now, if that plant and machinery is being used to make an outward supply, then only the credit is eligible. Very simple example: you are constructing a cement plant. So for that cement plant,
there is a specific need that the crusher has to be in the form of an immole property, and there would be structural and foundation support which will carry that entire mixture जिसमें वो grinding होएगी. So that will become plant and machinery. Second example could be a lift installed at a manufacturing site. थर्ड, a burner installed in any facility. एक फैक्ट्री के अंदर बर्नर है. अब वो बर्नर जो है, that requires huge temperatures to sustain huge temperatures. It has to be a nimble property to sustain those temperatures, and it might require that there is some use of cement, seals, etc. So all these will become form of plant and machinery, because if these are not existing, I will never see my product. And if I will never see my product, there is no way I will be able to sell those goods, or I would be able to make the outward supply. But there could be certain construction of plant and machinery which may only offer a convenience. Convenience may help you increase your businesses, but it is not specifically used for making an outward supply. So ये जो distinction है, it will slowly and steadily, we will see that in future, the department comes up that, okay, even though it is a plant and machinery, but this plant and machinery is being used for business purposes and not for making an outward supply. After that, it says that even though there might be situations which may qualify as plant and machinery, but they have specifically included land, building, or other civil structures, telecommunication towers, and pipelines outside the factory premises. Even though they qualify everything that these are used for making an outward supply, but still they say that a land, a building, or any other civil structure, a telecommunication tower, and pipeline are outside the purview of plant and machinery, and therefore no ITC is available on these things. So, if you have any queries, just post it on the chat. We will take it up as and when we close the first topic. Next is place of supply. So, the place of supply provisions are governed through Section 12 and 13 of the IGST Act. We are focusing on Section 12, which is for when both the parties are from India. So the place of supply of services directly in relation to an immovable property is the location of immovable property itself. यानी place of supply क्या होगा, जो immovable property की location है वही मेरा place of supply हो जाएगा. So place of supply determines, helps me in determining whether I have to charge CGST, SGST, or I have to charge IGST. Because if the location and place both are in the same state, it is an intrastate supply. CGST and SGST will apply. And if both are in the different states, I will charge IGST. So let us take an example that I am constructing a highway. Some part of the highway is in Delhi and some part of the highway falls in Haryana. In this situation, what will be the place of supply? Assuming 80% of the highway is in Haryana and 20% is in Delhi. So in this situation, both Delhi and Haryana will be the place of supply, and as per rule 4 of the IGST rule, the things have to be apportioned. उसको apportion करके दोनों के place of supply को specifically define करना पड़ेगा. Another example, there is a main contractor who is located in Punjab. The contractor is located in Punjab. There is a site which needs construction in Delhi. A subcontractor is located in Delhi. Now the issue arises whether the main contractor is required to obtain registration in Delhi or not. Whether the Punjab party would be required to obtain registration in Delhi or not. So now think practically. I am in Punjab. My location is Punjab. The construction is being done in Delhi. So from Punjab, I can issue an IGST invoice and my place of supply would be Delhi. So I would be eligible for, I can issue the invoice IGST, charge IGST and pay taxes accordingly. But once you are receiving the invoice of the subcontractor, then what would be the situation? यानी मैंने तो पंजाब से invoice बना दिया, IGST लगा के Delhi pass on कर दिया. But when I am receiving the invoice from the subcontractor will say, I am located in Delhi, my location is Delhi, my site is Delhi, so I
For me, it is an intra-state supply. I will charge CGST and SGST, and my place of supply would be Delhi. अब आप सोचिए कि जो प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली का है, उसका क्रेडिट क्या पंजाब में मिलेगा? The answer is no. So theoretically, you will have to obtain registration in Punjab. So there could be a situation where you do not need any subcontractor, then the situation will change. But in this particular example, we specifically said that the entire contractor is subcontracting it to a Delhi contractor. So उस situation में you have to be very cautious that if there is a proper subcontract, then without registration you are risking the entire ITC. The subcontractor in Delhi cannot raise an invoice charging IGST with place of supply as Punjab. यानी दिल्ली वाला सब कॉन्ट्रैक्टर आईजीएसटी पंजाब का लगा के आपको क्रेडिट पंजाब नहीं भेज पाएगा, ड्यू टू दी कंपल्शन कि उसका प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली में रिटेन हो जाता है. So you have to be very cautious on this. So taxability के लिए there is a flow. So the flow says that इससे पहले एक लेवी क्रिएट होता है, वो लेवी को हम टेस्ट करते हैं. इफ द सर्विस इज एक्चुअली लेविएबल टू टैक्स, देन वी मूव ऑन टू द रेट नोटिफिकेशन. रेट नोटिफिकेशन के बाद वी चेक वेदर देर इज एनी एग्जेम्पशन अवेलेबल और नॉट. If there is no exemption available, then we see whether any recipient is liable to pay the taxes or not. So this is the sequence. इसको I say the flow of taxability. First, check the taxability, whether levy has been created or not. If levy has been created, check rate notification for rate. After, once you see that, okay, the rate has been given, then you move to the exemption notification, whether there is any exemption or not. And finally, we see whether who is required to pay the taxes, whether the supplier is required to pay the taxes or the recipient is required to pay the taxes. तो वो फ्लो को हम चेक कर लेते हैं. एग्जेम्पशन और जो आरसीएम है ये मे और मे नॉट हो, लेकिन रेट तो हर सर्विस का प्रोवाइडेड है, बिकॉज देर इज अ रेसिडुअल कैटेगरी दैट if the services are not covered in any of the above specified, then there is a residual category. तो सारी रेसिडुअल में जाके टैक्सेबल तो हो ही जाएंगे. General rate of works contract services is now 18%. Now other issues, at the time of filing of registration, you can specifically टिक मार्क दी एक्टिविटी ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, यानी आपके प्रोफाइल पे ही नजर आ जाएगा दैट यू आर अ वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर. एंड सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी इन रिलेशन टू वैल्यूएशन, दिस provision needs to be understood by every works contractor, that if any amount which was originally required to be paid by the contractor but it has been incurred by the recipient, even then he is required to pay the taxes. सिंपल वर्ड्स में समझते हैं. यू आस्क कि तरुण मेरे लिए आप ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर दीजिए, दैट यू हायर्ड मी टू कंस्ट्रक्ट योर बिल्डिंग. आई सेड सर ओके, माय चार्जेस वुड बी से 1 crore rupees. You said okay, done. During the construction, you felt that there is a delay in cement and steel because I am not arranging the goods, or the quality is being risked, or I am taking a lower quality, or I am taking steel of a lower quality XYZ. You said, okay, what we will do is that your 1 crore is as it is. I will supply you cement and steel at my own cost, and I will deduct the amount from your charges. So earlier, the contract was 1 crore rupees, and now you are adjusting the contract. You are saying that you will provide me the cement and steel and you will make necessary amendment. And that value assuming is 20 lakh rupees. So now you will pay me 80 lakh rupees. You will adjust 20 lakh rupees. You will reduce the value of supply by 20 lakh rupees. Section 15(2)(b) mandates that the 20 lakh rupees will also be chargeable to GST. So the contractor will liable to pay tax on 20 lakh rupees. So इसमें क्या होगा? The contractee should actually issue the invoice to the contractor. The contractor will take the input tax credit and again issue the invoice to the contractee. Then the entire flow of transaction will be completed. Basically, contractee ने purchase करके आपको sale कर दिया at the same value, and then you are executing your entire contract of rupees 1 crore rupees. If you are not doing including that 20 lakh rupees, it will become a non-compliance and valuation can hamper the entire situation, क्योंकि उस 20 लाख रुपीस के ऊपर 18% would be 3.6.
3,60,000 rupees. After 3 years, the amount will multifold, though approximately 6 to 7% का impact total value पे आ जाएगा, and the entire activity will go against you, and it will create a lot of mess during the litigation stage. So it is better to plan those transactions accordingly. So now, before moving on to the second phase of our discussion, I would request that if we have queries on works contract, we take those and then we move on to the second part of our discussion. Tarun, 2-3 questions are there regarding position of ITC on centralized AC और कन्वीनियंस और एक्चुअल उसकी बात आपने की थी कि Yes. कन्वीनियंस के लिए है या फॉर द आउटवर्ड सप्लाई है डायरेक्टली. सेंट्रलाइज एसी के साथ तीन चीजें लिंक होगी. सबसे पहली तो प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन पे बात पे जाएंगे. द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड वेदर इट क्वालिफाइड एज एन इमल प्रॉपर्टी और नॉट. क्योंकि इफ आई कैन प्रूव एंड जस्टिफाई that I can remove the HVAC, I can remove the system and take it to some other place और वो वहां पे reuse हो जाएगा, then it will not qualify as a immobile property. वो movable रह जाएगी. Section 17(5)(c) और 17(5)(d) पढ़ना ही नहीं. But in case it is a proper centralized system where the chiller is situated outside India or outside the premises, and you only have pipelines coming in that case also we advise our clients that chiller should be a separate equipment and the internal pipelines should be separate. The pipelines that are internally situated will become an immobile property because you cannot per se extract that and reuse it in the same form at some other place. And the chiller, because you can move that chiller from one place to another place and reuse it, so you would be eligible to claim the credit. But if the transaction has already taken place, so in my that chiller, if it qualifies as an immobile property, it would be very difficult for it to qualify as a plant and machinery for the purposes of section 17(5)(c) and D, because it is facilitating or improving the services of your businesses. But per se, it is not helping you in making an outward supply. Again, there could be difference of view, but this is my understanding of बिजनेस और आउटवर्ड सप्लाई. दोनों को कुछ तो डिस्टिंग्विश करना है, डिफरेंट मीनिंग देना पड़ेगा. अगर दोनों सेम कवरेज रख रही होती तो द लॉ वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट. सेक्शन 16 सबसेक्शन 1, रीड द प्रोविजन, यू विल सी that it specifically states for the business or furtherance of business, and in explanation the definition of plant and machinery it specifically states for the purposes of outward supply. तो जो नैरो स्कोप है उसको इंटरप्रेट करना जरूरी रहेगा. Similar The would second be, was, sorry. I was asking कि similar would be the scenario with lift installed in the factory, because sometimes in small industries or medium industries lift is there, but that is used by both for the material as well as for own convenience also. Yes. And But nowadays lifts can be very well said to be movable in nature. You can take all the equipment out. अगर आपका 4-6 person का लिफ्ट है तो you can take that lift in any area and you can reinstall it. So I think वहां पे you can always say, because immovable means that you cannot use it in the same form. But if you are able to use it in the same form, obviously the wires will change. But वो तो फिर ACs के साथ भी होगा. For example, today you have installed an AC, split AC at a particular place. तो उसकी जो वायरिंग है, जो कॉपर जा रहा है, that would have a separate length. If you are shifting it to some other place, तो वो change होगा. Similarly for TVs. So if broadly, if it is used, if it can be used in the same form, the credit would be eligible. So वहां पे I will not fight whether it is a plant and machinery or not. I will fight that it does not qualify as an immobile property. okay. विनोद जी, आपका आंसर ऑलरेडी हो चुका है. मनोज मित्तल जी का क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्टर इज इन दिल्ली, साइट इज इन नोएडा एंड कस्टमर और कॉन्ट्रैक्टी रजिस्टर्ड इन गुड़गांव, देन व्हाट वुड बी द सिचुएशन? Sir, you have to see only two things. What is your location? What is the place of supply? You are in Delhi, place of supply is यूपी नोएडा, तो आपको IGST लगाना है और आपका टैक्स का वहां पे क्लोजर हो जाएगा. यू डोंट हैव टू गो बियॉन्ड दैट. आपको ये नहीं देखना कि क्लाइंट कहाँ का है कहाँ का नहीं है. यू ओनली हैव टू सी दी साइट. क्लाइंट को ITC मिल रहा है नहीं मिल रहा है, जब
आता है तो क्लाइंट को अपने आप रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा यूपी के। संदीप जी का क्वेश्चन ऑलरेडी आंसर्ड हो गया। अरुण जी पूछ रहे हैं पोजीशन फॉर होटल इंडस्ट्री आईटीसी ऑन बिल्डिंग। होटल इंडस्ट्री सर, सफारी रिट्रीट की जजमेंट, ओके आई जस्ट मिस दैट सफारी रिट्रीट, so I am just briefing the safari retreat. So safari retreat judgment said that ITC on construction of animal property is a valid law. However, if anything qualify as plant and machinery, I am talking about even after the retrospective amendment, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट सस्टेन कर रही है उस पार्ट की बात कर रहा हूं, that even after the retrospective amendment, if anything qualify as plant and machinery, then ITC is eligible. During that judgment, they have categorically stated that hotels and cinema halls or theaters will not qualify as प्लांट एंड मशीनरी। यानी उसका आंसर तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने अपने अंदर ही दे दिया था कि दैट होटल्स, सिनेमा हॉल्स एंड थिएटर्स विल नॉट क्वालिफाई एज प्लांट एंड मशीनरी। दे रिलायड अपॉन द जजमेंट ऑफ आनंद थिएटर, an old Supreme Court judgment, and they said that there is nothing new in these facts, and we will rely on the old judgment which was given in the case of income tax for depreciation, and they said that it will not qualify as plant and machinery. तो जब सर प्लांट एंड मशीनरी नहीं है तो इट इज इमोल प्रॉपर्टी है, तो आईटीसी की एलिजिबिलिटी की बात नहीं होगी। Then another question है शाइना कपूर, प्लीज एक्सप्लेन रेट ऑफ जीएसटी ऑन गवर्नमेंट वर्क कॉन्ट्रैक्ट। Now, works contract on GST has seen so many changes. So, first of all, most of the contracts which have goods involved are taxable. और ये अभी से नहीं है, you have to understand, even in the sales tax and service tax regime, service tax on government contracts were exempted, but sales tax was chargeable. When the things got introduced into GST, because even earlier states were getting compensation on the works contract, they said we will ensure that there is the tax on this. So starting में there was a phase जब 12% और 18% का rate चल रहा था, and we have central government, state government, and local authorities in one segment, and there were government entities and government authorities. वो 12% से 18% पे पहले फेज के अंदर चली गई थी गवर्नमेंट अथॉरिटीज एंड गवर्नमेंट एंटिटीज। उसके 6 महीने बाद क्योंकि कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो रही थी, द इंटायर सबसेट वेंट टू 18%। एज ऑन डेट ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्ट्रैक्ट, देयर मे बी सम एक्सेप्शन क्योंकि नोटिफिकेशन बहुत बड़ी है, बट जनरली ऑल द गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स टुडे आर एट द रेट ऑफ 18%। आई थिंक वर्क कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चंस हो गए हैं सारे। एक क्वेश्चन अदर देन वर्क कॉन्ट्रैक्ट का है विजय कुमार जी का, तो दैट वी कैन टेक इन लास्ट, और अगर आप अभी कर सकते हैं आंसर तो वी कैन डू दिस एंड देन वी विल मूव अहेड, तो सारी क्लोज हो जाएंगे अभी हाँ। तक। ये है व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑफ जेसीबी अर्थ मूवर मशीन ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। So you have to see whether you are transporting it from one premises, from one GSTN to another GSTN within the same organization, or it is just movement of goods. If it is only movement of goods, तो आपको सिर्फ delivery चालान बनाना है, and you have to say that I am using it, moving it to execute a works contract at a particular site. So there would be a delivery चालान, and based on that delivery चालान, you will issue the e-way bill. और अगर आप अपनी जीएसटीएन से दूसरे जीएसटीएन पे कर रहे हो, then you will have to issue an invoice. So either you sell that particular item to the other GSTN, or what we practically do, we say that we are sending it on a lease or a service arrangement to another GSTN. So we only charge rental. So rental के केस में again we go back, create a delivery challan, and on the basis of that we issue the e-way bill. ओके राइट सर, वर्क कॉन्ट्रैक्ट क्वेश्चंस आंसर हो गए सारे। We can Okay. proceed with the other topic. Just give me a minute. So now the second issue is education services. So the first thing that comes to our mind when we read education is, जब भी हम सोचते हैं कि एजुकेशन के बारे में, तो सबसे पहली चीज आती है exemptions. Because education is one of the basic need of any society, and no government is expected to create a charge or
extract money out of this education system. So पहली चीज है कि एजुकेशन में exemptions तो होंगी, but these exemptions are very specific, very to the point, and very conservative, I would say. So again, the flow of taxability we have already discussed, so I'm not redoing it. So for RCM or for any exemption, there are three things that have to be understood very carefully, and only then apply the exemption notification or the RCM notification. The three things are: what is the supply that is specified in the serial number, be it exemption or reverse charge notification? Who is the specific supplier who has been specifically stated in the serial number? And finally, what is the category of the recipient? There might be a situation that the supply is education, the recipient is also eligible, but the supplier is not qualifying the exact verbatim qualification as required in the serial number or the exemption notification. So आपको तीनों चीजों को separately test करना है, supply, supplier and recipient. If any of these three limbs are missing, तो आपकी notification की exemption complete नहीं होगी. So for educational services, the levy has been created in section 9. The rate is also provided in notification number 11/2017, which is 18%, serial number 30. But when we read exemption notification, we see that in serial number 66 that there are certain services which are exempt. There is no RCM applicable on educational services. तो इस फ्लो से मुझे पता चल गया, ठीक है, आरसीएम नहीं है. अगर मैं एग्जेम्पशन में फॉल नहीं करता सीरियल नंबर 66 के, तो आई विल हैव टू क्रिएट टैक्स लायबिलिटी ऑफ 18% because there is no exemption available. That is why this flow is very relevant and applicable. So the main exemption is contained in serial number 66. It says that services by an educational institution and services to an educational institution are exempt. These are not the extract of serial number 66. I am saying that the exemption is revolving around educational institution. यानी जो हम exemption अभी पढ़ने जा रहे हैं उसका center point है educational institution. So it would be by or to an educational institution. So the first thing that we need to understand is what is the meaning of educational institution. So educational institution have been defined to say that an institution providing services by way of preschool education and education up to higher secondary, or education as part of a curriculum for obtaining a qualification recognized by any law for the time being in force, or any vocational course. So in simple words, I say school, universities, college and institutes, or a skill center, all these qualify as educational institutes. These must be recognized by the law also. That is very important. Matlab, if you are doing a preschool education, there is no specific requirement of registration. But if you are providing higher education or secondary higher education or equivalent, then the school has to obtain a specific registration. Only then you are eligible to do so. Similarly, any university, college or institute is also required to be recognized. वो चीजें qualify होनी चाहिए, then only you become an educational institution. So simple words में school, college, university, institute or skill centers are educational institutions. So what is qualification recognized by any law? So it is not defined in the GST law. I am saying if you read the second box, it says education as part of a curriculum for obtaining a qualification recognized by any law for the time being in force. So ये जो highlighted portion है, qualification recognized by any law, we are discussing that. It is not defined in the GST law and it was neither defined in the service tax law. But if we see university grants education, it says that anything which is recognized by a UGC or AICTE or a professional institute like ICI, these are the qualifications which have been recognized by the law. And these are extract from circular 107/01 of service tax regime. यानी उन्होंने खुद डिफाइन नहीं किया, उन्होंने बोला जो यूजीसी ने कर दिया
AICTE ने कर दिया, या प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट हैं जो एक्ट से बन के आते हैं, फॉर एग्जांपल ICI, ISCSI, ये सारे हमारे इस डोमेन के अंदर क्वालिफाई करें। Approved vocational courses, again, it is defined in the act कि what will be an approved vocational training institute, और जो institute वहां पे notify होगा वही educational institution के अंदर qualify करेगा। I am not reading the definition verbatim. You can also refer circular 55/29 of GST for this particular further details on vocational educational courses. Now moving on to the specific exemption. So it says that services provided by an educational institution. So I am a school, I am a university, I am an institute. So we are talking about the school, university, or the institute. If they are providing services to any student, faculty, and staff, then it is exempt. Or by an educational institution by way of conduct of entrance examination against consideration in the form of entrance fee. यानी अगर मैं entrance, there are many institutes which take an entrance exam, and to conduct that entrance exam there is also an entrance fee. So these amounts are exempt. Or if an educational institute is providing services to student, faculty, or staff, it is also exempted. Another thing, any services provided by institution is exempt, be it tuition fees, building fund, transportation, canteen, anything. The only condition is the recipient should either be a student, a faculty, or a staff of the institution. तो आप कुछ भी दोगे वो exempt है, and there is no charge created on that. So by an institute, it is very simple: to student, faculty, and staff, and entrance examination. That's it. Then services provided to an educational institution. अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को अगर कोई सर्विसेज दे रहे हैं, सो बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट, फैकल्टी, एंड स्टाफ, so we have divided this thing into three categories: schools, universities, and skill center. So transportation, स्कूल को सारी चीजों में एग्जेम्पशन मिलती है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स में भी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनीवन यानी स्टूडेंट, फैकल्टी, स्टाफ, स्कूल के लिए एग्जेम्पशन है। केटरिंग इंक्लूडिंग मिड डे मील स्कीम स्पॉन्सर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, अगेन एग्जेम्पशन। सिक्योरिटी और क्लीनिंग और हाउस कीपिंग सर्विसेज इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अगर आई एम प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू अ स्कूल, आई एम प्रोवाइडिंग cleaning services or housekeeping services to a school, those are exempt. I am not liable to pay any tax on that. But if I am providing these to university, then those are chargeable to GST. And similarly, if these services are provided to a skill center, even then they are chargeable to GST. यानी it is presumed जैसे ही आप 12th clear कर लेते हैं, then all these services become a kind of non-essential in nature, and if still these are provided, these would be chargeable to GST. तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन आ गया, केटरिंग आ गया, और मेंटेनेंस आ गया। इसी के अंदर दो आइटम्स और ऐड होती हैं। वन इज सर्विसेज रिलेटिंग टू एडमिशन टू और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन बाय सच इंस्टीट्यूट। वन इज व्हेन द इंस्टीट्यूट इज इटसेल्फ कंडक्टिंग द एग्जामिनेशन, वो एंट्रेंस एग्जाम करा रहे हैं। सेकेंड है उन्होंने किसी और की सर्विसेज ली हैं टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन, सो वेदर दोज वुड बी एग्जेम्प्ट, तो द आंसर इज यस, तो वो सबके लिए एग्जेम्पशन है। सप्लाई ऑफ ऑनलाइन जर्नल्स और पीरियोडिकल्स, तो ऑनलाइन जर्नल्स और पीरियोडिकल्स जनरली स्कूल्स के अंदर होते नहीं है, तो वहां पे एग्जेम्पशन है नहीं। वोकेशनल कोर्सेज के अंदर भी दे हैव डिक्लाइंड दैट इट इज नॉट अवेलेबल, ओनली फॉर recognized qualification they have exempted supply of online education journals and periodicals. So this is again an important classification जहां पे आपको, if you are providing services to an educational institution, there are 5 categories starting from transportation, catering, housekeeping, admission, and then online educational journals and periodicals. स्कूल्स ऑलमोस्ट सब जगह पे कवर होते हैं, ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स वहां पे होते नहीं है, तो स्कूल्स को सारी जगह पे एग्जेम्पशन है। उसके अलावा रिकॉग्नाइज क्वालिफिकेशंस को एडमिशंस के लिए कोई भी सर्विसेज लेंगे उसके लिए एग्जेम्पशन है, उसके लिए तो अक्रॉस द सेक्टर एग्जेम्पशन है। ऑनलाइन एजुकेशन जर्नल सिर्फ और सिर्फ रिकॉग्नाइज क्वालिफिकेशन यानी कॉलेजेस वगैरह के लिए एग्जेम्प्टेड है।
अदरवाइज कोई एग्जेम्पशन अवेलेबल नहीं है. So these are very strict, very rigid. You should read the exact notification to understand what is the exact line, what is the word that is being specified in the notification before giving your client the final opinion that these are taxable or these are exempt. Sorry. So now moving on to the case studies. So the first issue is that there is a coaching institute which is providing helping you get qualify in the entrance examination, whether those would be exempt or not. So even though you are providing you are teaching a specific course, but outside an educational institution, so these will still be chargeable to that. क्योंकि आपका जो भी सिस्टम है दैट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द लॉ, यू आर अ प्राइवेट इंस्टीट्यूट. तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट की कोई भी सर्विसेज एग्जाम नहीं है, दोज वुड बी चार्जेबल टू जीएसटी. डे केयर स्कूल के अंदर व्हाट इज द टैक्सेबिलिटी? इन डे केयर दे से इफ यू आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू योर ओन स्टूडेंट इट इज एग्जाम. इफ यू आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू एनीवन आउटसाइड द स्कूल तो वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा. क्योंकि हमने देखा था सर्विसेज बाय प्री स्कूल और स्कूल, any services to their student, faculty or staff is exempt, but anyone outside those categories would be chargeable to GST. If you are organizing an annual function, वहां पे आप 1000 rupees charge लेते हैं, then what would be the situation? For students it would be exempt, for persons other than student it would be taxable. वहां पे आपको charge देना पड़ेगा, tax pay करना पड़ेगा. Next issue, whether supply of question paper to educational institution is supply of goods or a service. मैंने क्वेश्चन पेपर बना के दिया, मैंने क्वेश्चन पेपर एक्चुअल में प्रिंट करके दिया, so whether it is a supply of goods or supply of services. So the fact is applicant is supplying printed question paper to a educational institution. So the contention of the applicant in this was question paper is supply of printed material and accordingly is liable to GST and ITC on inward supply should also be eligible. The applicant, this is the findings of the authority, cannot be supplying question paper as good under, sorry, I am reading it again. The third bullet. Every transaction is a contract, but open market transaction in question paper as goods being illegal and are not enforceable void law and void contract this is not applicable in such cases. So supply of question paper is providing printing services which is covered. I'm just moving, just give me. Sorry, I think I have reproduced a wrong extract over there. I am reading the final order of the authority. So they said that when you are providing question paper to an educational institution, it is not the goods, it is not the paper that the school is expecting out of you. It is the printing services which is expected out of you. So उन्होंने बोला कि ये printing services हैं and accordingly these will be covered in the exemption जो हमने पढ़ी थी कि कोई भी services exemption होगा या नहीं होगा. I am reproducing the exemption extract. Just give me a minute. Services by way services relating to admission or conduct of examination by such institution. तो उन्होंने बोला ये जो क्वेश्चन पेपर है दीज क्वालिफाई एज सर्विसेज क्योंकि ये प्रिंटिंग की सर्विसेज है. उन्होंने आपसे पेपर नहीं खरीदा है, उन्होंने आपसे बोला कि हमें ये प्रिंटिंग सर्विसेज दे दीजिए. सो बिकॉज the expectation was not paper but it was printing services, so they said it is a service which is exempted under the GST law. So and similar view has also been taken in another advanced ruling. Another services which generally most of the institute provides are कि जो uniforms और bags देते हैं, exercise books देते हैं, and finally printed books देते हैं. तो uniforms and bags, these are not services, these are supply of goods, these are chargeable to GST. If you are providing exercise books, etc., again these are chargeable to GST. Printed books are exempt from GST. So वो classification है.
it is very important to understand that services by an educational institution to its members, to its student, faculty, and staff are exempt, but supply of goods is not exempt. तो उसकी category देखनी है. If it is exempted specifically, then only there is no tax liability. Otherwise, tax will be created. These are some other advanced ruling which can be referred to you, which you can refer for further elaboration on the issues. So in simple words, services by an educational institution to student, faculty and staff is exempt. Entrance examination against entrance fee is exempt. Services to an educational institution, so transportation, catering, manpower, cleaning, housekeeping, admission or conduct of examination, and finally online journals. These are the exemptions specifically for education. Now, education is a very broad term and there are many semblance around it. So, uske alawa bhi, after 66 also we see that there are various exemptions available in the notification number. For example, entry number 69, which specifically said that National Skill Development Corporation, if it is providing any services, Sector Skill Council approved by the National Skill Assessment Agencies, a training partner approved by National Skill Development in relation to these activities. So there are specific courses which have been notified, which have been specifically approved, which are exempted by way of entry number 69. Entry number 70 is also similar, that if there is a specific uh, services which have been specifically exempted under skill development initiative scheme, then those are also exempted. Entry number 71, services provided by training providers under Deen Dayal Upadhyay Gramin Kaushalya Yojana, again a specific scheme under which if you are providing the services, then these are also exempt. So 66 is a broader item which are applicable across the sector, across the jurisdiction. 69, 70 and 71 are specific training, specific services which have been exempted. So वो specifically you have to go to the specific item only. Apart from this, in serial number 22 of exemption notification, they say that if you are giving on hire a motor vehicle for transportation of goods, that is also exempt. So this is outside serial number 66, wherein they have said that these services are also exempt. And what is the service? अगर आप motor vehicle देते हो यानी buses देते हो for transportation of students, then you are not required to charge any tax on these items. 67 services provided by IIM are also exempted, which was omitted. So आज की डेट में IIM कोई भी services दे रहा है तो those are chargeable. And the last and most important thing, if you are an educational institution and you are providing only exempt services and there is no taxable services, then by virtue of section 23, you are not required to obtain any registration. यानी आपकी registration की सारी requirements खत्म हो जाती है, आपको कोई registration required नहीं. The biggest problem with an online course and a specific service kind discussion of an exemption is that exemption is only a one-liner exemption. So we are now trying to threadbare that exemption and understanding what are the various limbs or what are the various expectation of these exemption. So ये होती तो एक line item है, but we have to insert what are the various subset or the say hands and legs to this particular exemption. So again, coming back and summarizing, section 66, serial number 66 is the main, which says that services by an educational institution are exempt to faculty, students, and staff. Apart from that, any entrance examination conducted for an entrance fees is also exempted. Then 5 services to an educational institution are exempt. उसमें भी स्कूल को 5 exempt है, वो exempt है, vocational को 1 exempt है. वाली है वो अक्रॉस सब जगह पे एग्जेम्प्ट है. तो ये चीजें हम लोगों को थोड़ा सा लिंक करके चलना पड़ेगा. Now moving on to another exemption, healthcare services. Now these are very small, healthcare and NGO. NGO थोड़ा सा elaborative है, but healthcare is very simple and small.
तो इसके ऊपर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो सो तरुण जी, पहले क्वेश्चंस लेने हैं एजुकेशन वाले या बाद में ले लें फिर? ले लेते हैं मैम, पहले ले लेते हैं। ठीक है। मनोज जी का क्वेश्चन है, आईसीआई चार्जिंग जीएसटी ऑन एवरीथिंग फ्रॉम मेंबर्स इवन ऑन मेंबरशिप फीस, मींस दीज ऑल आर टैक्सेबल एंड नो एनी एग्जम्पशन। सर आई टोल्ड यू, वो रिकॉग्नाइज्ड कोर्स होना चाहिए अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। तो जो इंस्टीट्यूट की ओरिजिनल जो स्टूडेंट फीस देता है वो एक रिकॉग्नाइज लॉ है, वो एग्जेम्प्ट है। लेकिन जब मेंबर कोई सर्विसेज ले रहा है तो दोज आर नॉट एनी रिकॉग्नाइज लॉ, और मतलब कोई ऐसा स्पेसिफाइड कोर्स नहीं है विच हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी लॉ। फॉर एग्जांपल अ सर्टिफिकेट कोर्स और एनीथिंग अदर देन दैट, कोई आप सेमिनार कर रहे हो, तो दोज आर नॉट एनी स्पेसिफिक एजुकेशन दैट इज बीइंग ग्रांटेड टू यू। तो इसलिए वहां पे चार्ज क्रिएट रहता है। Next is vehicle given on hire to regional center of university for transportation of students. मैम Taxable or not? This इट is इज एग्जाम्प्ट विच वी हैव रिसेंट, मतलब अभी जो हमने डिस्कस किया था लास्ट एग्जाम्पशन इसी के अराउंड थी। then Arun ji का है, educational society providing online examination service to private limited and providing the building and computer lab on rent. सर again, services by an educational institutions is exempt only if they are being provided to student, faculty and staff. अगर आपने थर्ड पार्टी को रेंट पे दे दिया, आपने केटरिंग वहां पे कैंटीन के लिए किसी को रेंट पे दे रखा है, आपने बैंक को कोई जगह दे रखी है, वो सारी टैक्सेबल है एंड देर इज नो सेकेंड थॉट, या उसमें कोई डाउट ही नहीं है। यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक कि उनकी सर्विसेज सिर्फ स्टूडेंट के लिए एग्जेम्प्ट है, बाकी सब टैक्सेबल है। सर इसमें एक जो अभी डिस्कस किया था आपने, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, Yes. एडमिशन बाय वे ऑफ एडमिशन एंड कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, तो जो कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन है उसमें वो अदर देन एंट्रेंस वाले भी कवर हो रहे हैं सारे? Yes. ठीक है। नेक्स्ट है विनोद जी का है, असेसमेंट टेस्ट फीस टेकन बाय कॉलेजेस फ्रॉम स्टूडेंट। असेसमेंट टेस्ट सर फीस असेसमेंट टेस्ट कौन सा है? अगर उनके करिकुलम का पार्ट एंड पार्सल है तो इट इज एग्जाम। colleges are also included in educational institution, right? कॉलेजेस के अंदर दो, सॉरी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हमने तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया था, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशन, एंड थर्ड वाज वोकेशनल इंस्टीट्यूट। तो आपको ये देखना है कि कौन सी एग्जामेशन आप पढ़ रहे हो और किसके लिए एप्लीकेबल है। तो कॉलेजेस भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आते हैं बट बहुत लिमिटेड। जो वो सर्विसेज दे रहे हैं उसमें कोई मतलब डिस्टिंग्विशमेंट नहीं है स्कूल और कॉलेजेस के बीच में। लेकिन जब वो सर्विसेज रिसीव करे तब वहां पे एक डिफरेंशिएशन, बाइफिकेशन लॉ ने किया हुआ है। सर ये कॉलेजेस यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड होने चाहिए? हाँ जी। कॉलेजेस नीड टू बी यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड ओनली यस फॉर? यस यस, विदाउट दैट तो वो डिग्री वैलिड नहीं होगी, वो फिर प्राइवेट कॉलेजेस इंस्टीट्यूट हो गया। कराने लग गए ना कॉलेज के नाम पे। हाँ जी। लेकिन कॉलेजेस के नाम पे काफी कोर्सेज वगैरह करा देते हैं, तो कई बार रिमोट सिटीज में देखो या टीयर 2 में देखो तो ऐसे बड़े चल रहे हैं, नाम कॉलेज है बट अदरवाइज कोई लेना देना नहीं है यूजीसी से। तो वो यहाँ पे फिर मेरे को कवर होते हुए नहीं लग रहा। शाइना कपूर जी का है, सर एज पर सीरियल नंबर 22 द व्हीकल हायरिंग इज एग्जम्प्ट only for school provided to colleges are taxable or not? This is the question. Provided to colleges are taxable or not? ओनली टिल स्कूल इट इज एग्जेम्प्ट, स्कूल के ऊपर जाते ही वो फिर टैक्सेबल हो जाएगा। Okay. अरुण जी का है, above 20 lakh service provided registration will be taken for educational society. This also you have अबाउट answered. 20 लाख रजिस्ट्रेशन, इफ एजुकेशनल सोसाइटी नहीं वर्ड यूज करूंगा मैं, यहाँ पे इंस्टीट्यूट करूंगा। इफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज ओनली प्रोवाइडिंग सर्विसेज विच आर एग्जाम्प्ट देन नो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड irrespective of the amount. But if the amount, if you are providing services which are taxable or you are supplying any goods, तो आपको टैक्स चार्ज करना पड़ेगा और मतलब रजिस्ट्रेशन ट्रिगर हो जाए। Right, sir. Next proceed करते हैं, questions are completed. Next is healthcare services under GST. So I'm reading the exemption verbatim.
which services by way of healthcare services by a clinical establishment, an authorized medical practitioner, or paramedics. These are exempt. So the important words are that the service must qualify as healthcare services and it must be provided either by a clinical establishment or an authorized medical practitioner or paramedic. अभी मैं प्रोवाइजो को छोड़ रहा हूं, पहले मैं क्लॉज बी पढ़ रहा हूं. Services provided by way of transportation of a patient in an ambulance other than those specified in A above. तो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट इन एम्बुलेंस वो भी मेरा एग्जाम्प्ट हो गया और हेल्थ केयर सर्विसेज जो है वो भी मेरी एग्जाम्प्ट हो गई. अब प्रोवाइडो को अभी भी होल्ड करके पहले हम ये समझते हैं व्हाट इज एग्जैक्टली अ हेल्थ केयर सर्विसेज एंड हु इज अ ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर. So healthcare services means any services by way of diagnosis or treatment or care of illness, injury, deformity, abnormality, or pregnancy in any recognized key system of medicine in India and include services by way of transportation of the patient to and from a clinical establishment, but does not include hair transplant or cosmetic or plastic surgery except when undertaken to restore or to reconstruct anatomy or functions of body affected due to congenital defects, development abnormalities, injury or trauma. So in simple words, जब आप इस definition को पढ़ते हो तो कोई भी एक्टिविटी जो एक इंजरी, इलनेस या आपके जो हेल्थ से रिलेटेड है उसको कवर करते हैं. लेकिन जैसे ही आप हेल्थ से उसको बाहर निकालते हो और ये बोलते हो कि सर मुझे हेयर ट्रांसप्लांट कराना है, मुझे प्लास्टिक सर्जरी कराना है, तो दोज आर नॉट कवर्ड विद इन द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज. तो हेल्थ केयर इज वेरी स्पेसिफिक, जो आपकी बेसिक हेल्थ की बात करता है, आपकी इंप्रूवमेंट यानी लुक्स की बात नहीं कर रहा है. यहाँ पे लुक्स को डिस्टिंग्विश करके उसने बाहर कर दिया कि उसकी हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे. And who is a authorized medical practitioner means a medical practitioner registered with any of the councils of the recognized system of medicines established or recognized by law in India and includes a medical professional having requisite qualification to practice in any recognized systems of medicine in India as per any law for the time being in force. यानी सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूं तो किसी भी सिस्टम ऑफ जो अपना मेडिकल है उसमें इफ यू आर रिकॉग्नाइज और आपकी रजिस्ट्रेशन है तभी आप बनते हो. जैसे इंस्टीट्यूट के लिए वी हैव अ मेंबरशिप. सिमिलरली अगर आपके यहाँ पे जो रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, इट कुड बी आयुर्वेदिक, इट कुड बी नॉर्मल ऑल्सो, तो वो सारे यहाँ पे कवर हो जाते हैं, आपकी एग्जेम्पशन आ जाती है. नाउ गोइंग बैक टू द एग्जेम्पशन अगेन. सो हेल्थ केयर सर्विसेज पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट कर दी, ट्रांसपोर्टेशन भी एग्जेम्प्ट कर दिया. ट्रांसपोर्टेशन के बाद में आप देखोगे सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अ पेशेंट इन एम्बुलेंस, उसके साथ है अदर देन दो स्पेसिफाइड इन ए अबे. यानी ए में जो है वो तो एग्जेम्प्ट है ही है, उसके अलावा भी जो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज सिर्फ एम्बुलेंस की दे रहे हैं वो एग्जेम्प्ट है. क्योंकि जब आप हेल्थ केयर पढ़ते हो उसमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज भी इंक्लूडेड है. लेकिन आपने डिसाइड किया कि आप सिर्फ एम्बुलेंस की सर्विसेज दोगे तो वो भी उन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया क्लॉज बी के अंदर. Now we read the proviso to clause A. Provided that nothing in this entry shall apply to the services provided by a clinical establishment by way of providing room other than ICU, CCU or ICCU, neonatal or NICU, having room charges exceeding rupees 5,000 per day to a person receiving healthcare services. यानी आपके जो आईसीयू या उससे बड़े वाली जो स्पेसिफिक है जहां पे बिना उस रूम के इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रीट यू, अगर आप नॉर्मल रूम में शिफ्ट होते हो उस नॉर्मल रूम के अंदर इफ द रूम रेंटल एक्सीड्स 5,000 रुपीज तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा. इफ द रूम रेंटल, सो आपकी हेल्थ केयर सर्विसेज एग्जेम्प्ट रहेंगी लेकिन आपका रूम रेंटल जो है वो आपका चार्जेबल हो जाएगा एंड इट इज 5,000 पर डे. क्या आपको पर डे के बेसिस पे यू हैव टू सी वेदर इट इज एग्जेम्प्टेड और नॉट. तो ये अमेंडमेंट भी बहुत पहले आ गया था. इट वाज टू क्रब जो कैपिटलाइजेशन हो रहा था. एंड यू इफ यू आर एक्चुअली मूविंग टू अ 5 स्टार होटल इन दी क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट तो उन्होंने बोला कि इसके ऊपर आपको जीएसटी पे ही करना पड़े. देयर इज अनदर एग्जेम्पशन
in relation to healthcare services which is in relation to a rehabilitation kind of a thing. तो जब आपकी कोई थेरेपी होती है, rehabilitation होता है, तो वो सर्विसेज भी उन्होंने एग्जेम्प्ट कर रखी है अंडर सीरियल नंबर 74A। सो जैसे ड्रग एडिक्ट होता है, उनकी जो थेरेपीज होती हैं, तो दोज आर नॉट पर से मेडिकल, क्योंकि वहां पे ट्रीटमेंट हो रहा है टू या काउंसल हो रहा है सो दैट यू कम आउट ऑफ दोज एडिक्शंस, उनको भी इन्होंने एग्जेम्प्ट कर रखा है अंडर सीरियल नंबर 74A। सो मेडिकल के अंदर आई एम नॉट गेटिंग टू मच इनटू द डिटेल्स, क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत स्ट्रीमलाइंड है। नाउ CSR activities under GST. When I talk about CSR activities, those I will say these are not exactly CSR activities. It is any services provided by a charitable institution. क्योंकि यहाँ पे हम CSR activities जो कर रहे हैं हम उसकी बात कर रहे हैं, तो उसको कंसिडर करते हुए आई क्रिएट फोकस इज ऑन NPO and NGO. So a not-profit organization is an organization traditionally dedicated to furthering a particular social cause or advocating a shared point of view. However, an NGO is a not-profit organization that operates independently of any government, typically on whose purpose is to address a social or political cause. So यहाँ पे we are trying to distinguish between what is an NPO and what is an NGO. And once we read the definition, we identify that NGOs are part and parcels of NPO. तो उसको हम बोलते हैं, and the activities done by these organizations are generally referred to as charitable activities. तो नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि जो उसका इंटेंशन, द बेसिक और द सोल ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट एंड टू डू समथिंग फॉर समवन। एनजीओ इज अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विद द सिमिलर थॉट प्रोसेस, बट यहाँ पे सोशल या पॉलिटिकल कॉज इनिशिएटेड रहता है, तो दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं, एंड एनजीओ इज पार्ट ऑफ द एनपीओ। सो किसी भी सप्लाई ट्रांजेक्शन के लिए व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट देयर मस्ट बी अ सप्लायर, देयर मस्ट बी अ रेसिपिएंट, एंड देयर मस्ट बी अ सप्लाई अगेंस्ट विच रेसिपिएंट इज पेइंग टू द सप्लायर। यानी एक सप्लायर है, एक रेसिपिएंट है, एक सप्लाई होनी चाहिए जो सप्लायर रेसिपिएंट को दे रहा है, एंड फाइनली देयर मस्ट बी अ फ्लो ऑफ कंसिडरेशन फ्रॉम रेसिपिएंट टू द सप्लायर। एंड ये सारी चीजें जो है बिजनेस की डेफिनेशन को भी क्वालिफाई करनी चाहिए। दिस इज द बेसिक of a requirement of a supplier transaction. So if there is a supplier who is providing a supply, the beneficiary is someone else and the payer is someone else. In this situation, who will be considered as the recipient, whether it would be beneficiary or the payer? So the answer to this lies in the definition of recipient, which says that whoever is liable to pay the consideration will be deemed to be the recipient. यानी बेनिफिशियरी कौन है, दैट बिकम्स इररेलेवेंट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि रेसिपिएंट इज द पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू पे। सो जब हम अपने बच्चों की स्कूल फीस भर रहे हैं, तो द बेनिफिशियरी इज आवर किड, बट वी आर प्रोवाइडिंग द मनी, वी आर पेइंग द मनी, तो वी आर द रेसिपिएंट, स्कूल इज द सप्लायर। वो एग्जेम्प्ट है, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे। We are understanding who is a beneficiary and who is a payer. Moving ahead, consideration is another important thing. अभी इन सबको मैं ले जाके आगे एक चीज से लिंक करूंगा, that is why I am creating a base for everything. Consideration, it says that any payment made or to be made, whether in money or otherwise, in respect of or in response to or for the inducement of the supply of goods or services or both by the recipient or by any other person. आप सिर्फ अब रेड वाला पोर्शन पढ़िए, इन रिस्पेक्ट ऑफ, in response to or for the inducement of the supply of goods or services by the recipient or any other person. यानी if there is a supply, उस सप्लाई के लिए पेमेंट करी जा रही है, तो ही हम बात करेंगे। जस्ट बिकॉज आपको पैसा मिल रहा है, इट विल नॉट क्वालिफाई एज कंसिडरेशन। नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ नॉन स्पेसिफिक डोनेशन गिवन टू अ टेम्पल। तो आप एक टेम्पल में गए, आपने दान पात्र के अंदर डोनेशन डाल दी और आपने वहां पे लंगर भी खाया। सो इस
मनी से ही वो लंगर की डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी. नाउ द इश्यू अराइजेस whether this donation received by the temple would be chargeable to GST or not. The answer is no. Everyone knows कि वो आंसर नो है. But why? बिकॉज सप्लाई के जो इंग्रेडिएंट्स थे वो यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो रहे थे. द मनी इज पेड टू एन एनजीओ विच इज टू बी यूज, सॉरी, दिस इज अनदर. यहाँ पे व्हाट आई हैव डन इज दैट द अमाउंट हैव बीन पुट इन द दान पात्र. जब मैंने दान पात्र में वो पैसा डाला, इट वाज नॉट फॉर द सप्लाई. मैं लंगर करूं नहीं करूं, कम करूं ज्यादा करूं, उससे लंगर का कोई लेना देना नहीं था. तो दैट इज नॉट इन रिलेशन टू एनी सप्लाई. इसलिए वो सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर हो जाता है. इवन तो उसके बाद मैं वहीं पे लंगर करके आ रहा हूं, इट विल नॉट बिकम चार्जेबल टू जीएसटी. इसी के सामने मैंने एक एनजीओ को पेमेंट करी और मैंने बोला कि आप इन स्टूडेंट्स को एजुकेशन दे देना, वेदर इट इज चार्जेबल टू जीएसटी और नॉट. तो लेट अस अंडरस्टैंड. अब यहाँ पे हम चैरिटेबल एक्टिविटीज को देखेंगे तब हमारा आंसर आएगा. So I am just reproducing the definition of charitable activities. So first category of charitable activity is public health. I am reading only the broad categories. Second is advancement of religion, spirituality or yoga. Third is advancement of educational programs or skill developments. And lastly, preservation of environment, including watershed, forest and wildlife. So broadly, चार categories में they divided charitable activities. One is public health, second is religion, spirituality, yoga, third is education, fourth is environment. And now, when are these exempt? When these are provided for the charitable purposes. और section 215 के अंदर this is provided कि what is charitable institution, charitable purposes as per income tax act. तो आपको यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट को भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इवेंचुअली दे विल गो एंड से दैट कि आपकी जो एग्जेम्पशन है वो तब आएगी जब आप 12AA के अंदर रजिस्टर्ड हो फॉर चैरिटेबल पर्पसेस. यानी दे हैव डिफाइंड जीएसटी के अंदर व्हाट इज चैरिटेबल एक्टिविटी. दे हैव लिंक्ड दैट चैरिटेबल एंटिटी with income tax, wherein they have stated that if you are registered under section 12AA of the Income Tax Act, only then you would be eligible for the exemption. So trust registered under section 12AA of the Income Tax Act, only then the registration, then the exemption will be applicable. So it might be possible that even though you are registered under section 12AA of the Income Tax Act, and you are qualifying charitable purposes as per section 215 of the Income Tax Act, but you are still not qualifying the definition or the activities of charitable activities. मैं एक बार फिर से सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूं. So we have charitable activity defined in GST Act. The exemption says that any activity performed by a charitable institution or a trust registered under section 12AA of the Income Tax Act for charitable activities is exempt. So ट्रस्ट जो 12AA में रजिस्टर्ड है एंड इट इज प्रोवाइडिंग चैरिटेबल एक्टिविटीज, ओनली देन इट इज एग्जाम. सेक्शन 215 बहुत वाइड है, बहुत वाइड है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें कवर होती हैं, बट जीएसटी के अंदर उसकी लिमिटेशन बहुत लिमिटेड है. सो वो आपको यहाँ पे डीलिंग करके चलना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, देर वॉज अ ट्रस्ट विच वॉज एंगेज इन सप्लाई ऑफ गुड्स सच एज बुक्स, सीडीज और डीवीडीज. तो इस केस के अंदर उन्होंने बोला just because you are registered under 12AA, you are qualifying the definition of charitable supply under Income Tax Act. It does not mean कि आप जीएसटी के अंदर भी वो exempt हो जाओगे. आपकी चैरिटेबल एक्टिविटी जीएसटी में डिफाइंड है, और जब तक आप वो नहीं करोगे आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा. So this is the extract from the flyer, one of the GST flyers. I am reading it verbatim. There could be many services provided by charitable and religious trust which are not covered in the definition of charitable activities as given in the notification. Such services would attract GST. For instance, ये उन्होंने instance दे दिया where it will be chargeable. Services of transportation of passengers for a pilgrimage,
or grant of advertising rights to a person on the premises of the charitable or religious trust, or on publication of the trust, or granting admission to events, functions, celebration, shows against admission fee or ticket, etc., would be liable to GST. So again, I am trying to summarize. We have the exemption is available to a trust registered under 12A, but only if they qualify to provide charitable activities as defined in GST Act. So the term defined in Income Tax Act is very wide. In GST, it is very small. So just because you are registered in 12AA does not automatically mean all services provided by the trust is exempt. You will have to test whether those are covered within the four limbs जो हमने discuss किए थे. And the four limbs were public health, religion, education and environment. जो यहाँ पे आपके four highlighted points हैं. So this is the exact extract of the notification which says that services by an entity registered under 12AA of the Income Tax Act by way of charitable activities, it is exempt. उसके अलावा they say that services by way of conduct of any religious ceremony, वो आपकी exempt है. Services by way of renting of precedent of a religious place owned or managed by an entity registered under 12AA. So 12AA के अंदर registered होना जरूरी है. इसके अंदर उन्होंने 1023C और 1023BAA भी ऐड कर रखा है. So बहुत limited activities को उन्होंने exempt कर रखा है. Then in case of an unincorporated or a non-profit entity जिसका मेन पर्पस है इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल लेबर और फार्मर्स का वेलफेयर, या जिसकी मेंबरशिप फी 1000 से कम है और वो किसी ट्रेड कॉमर्स इंडस्ट्री को प्रमोट कर रही है, देन दैट इज आल्सो एग्जेम्प्ट अगर आपकी कोई चार्जेस या फीस है. रिक्रिएशनल एक्टिविटीज इन रिलेशन टू आर्ट और कल्चर, अगेन दीज आर एग्जाम. अब ये जब तक आपका स्पेसिफिक केस नहीं आएगा, रीडिंग आउट दीज एग्जाम्पशन विल नॉट मेक एनी डिफरेंस. तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो था आपका ये वाला जो सीरियल नंबर 1 है, दैट सर्विसेज बाय अ 12AA registered entity are exempt if you are covered under the charitable activity. I am skipping this. Just give me, let me see. Okay, so if you are an NGO or an NPO and if you are supplying any goods, there are no specific exemption on those supply of goods. अगर वो nil rated है तो exempt है, otherwise those will be chargeable to GST. Flexibility of goods or services received by NPO. If you are receiving the services, then also there is no specific exemption. अगर वो exempt किसी specific serial number में तो ही है, there is no blanket exemption. So यहाँ पे इशू रिवॉल्व अराउंड जो आपकी वो है कि देयर इज नो ब्लैंकेट एग्जेम्पशन ईदर वे, बाय और टू दोनों साइड पे कोई ब्लैंकेट एग्जेम्पशन नहीं है. पब्लिक लाइब्रेरीज विच आर रन बाय चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स, सो देयर इज अगेन नो स्पेसिफिक एग्जेम्पशन, बट एंट्री नंबर 50 के अंदर इट इज सेड दैट इफ यू आर लेंडिंग बुक्स, पब्लिकेशन और एनी अदर नॉलेज, तो वो आपकी एग्जेम्प्ट है जो पब्लिक लाइब्रेरीज है. जो आपकी यात्राज हैं वो टैक्सेबल है, एक्सेप्ट अगर आप हज पे जा रहे हो या आपका कोई स्पेसिफिक नोटिफाइड यात्रा है, उसके अंदर आपको एग्जेम्पशन है, अदरवाइज दोज वुड बी चार्जेबल टू जीएसटी. With this, I am closing the deliberation. If we have any specific queries, we can take that. Tarun ji, 2-3 questions are there. Okay. एक विजय कुमार जी का, in whose name GST registration has to be taken in case of government educational institution? जो लीगल एंटिटी है उसी के नाम पे रजिस्ट्रेशन आएगा. मतलब आई कुड नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. Because in my view also अगर different colleges हैं तो उनके अपने different PAN होते हैं, उसी पर based GST जो number. आपकी लीगल एंटिटी है दैट विल बी रजिस्टर्ड. Shaina Kapoor ji, hospitals are paying freight to GTA for capital goods. Capital goods taxable is liable for RCM and registration. Is this question clear to you? मैम
आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी नोटिफिकेशन 13/2017 को पढ़ने के बाद आती है। उसके अंदर जब हम फ्रेट की बात करते हैं तो उसके अंदर वो सोसाइटी, ट्रस्ट, एक्सेट्रा, अगर ये रेसिपिएंट इस कैटेगरी में फॉल करता है, फैक्ट्री, रजिस्टर्ड एंटिटी, ट्रस्ट, कंपनी, पार्टनरशिप, एलएलपी, अगर उस कैटेगरी में आपका हॉस्पिटल आ रहा है, तो क्योंकि आपको सेक्शन 24 से आरसीएम ट्रिगर हो गया, जो आरसीएम की नोटिफिकेशन है उसके अंदर भी आपको कोई रिलीफ नहीं मिला हुआ, तो आपको रजिस्ट्रेशन ट्रिगर हो जाएगा एंड यू वुड बी लायबल टू पे द टैक्सेस, मतलब टेक द रजिस्ट्रेशन एंड पे द टैक्सेस। विनोद जी का क्वेश्चन है, इफ अ डॉक्टर इज चार्जिंग वैक्सीन एंड मेडिसिन charges along with the fees, what would that part of composite supply and total fees would be exempted? सर, अगर आप खुद ही बोल रहे हो कि वो कॉम्पोजिट सप्लाई है, यानी आपके पास मैं गया, मेरे चोट लगी हुई थी एंड आपने मेरे को बैंडेड कर दिया, जिसमें आपने बैंडेड भी लगाई है एंड मेडिसिन भी लगाई, तो इट इज एन एग्जेम्प्ट सप्लाई, इसमें कोई इशू नहीं है। बट इफ यू आर रनिंग अ फार्मेसी और आप मेरे को मेडिसिन अलग से सेल कर रहे हो, देन इट वुड बी चार्जेबल टू टैक्स। कॉम्पोजिट सप्लाई के केस में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, इट वुड ऑलवेज बी एग्जेम्प्ट। Next question is related to charitable activities. This is charitable trust not registered under 12AA. Wait a minute. Received donation. Can GST be paid on the donation amount also? सर, जब हम डोनेशन की बात करते हैं तो एक चीज आ गई कि क्या उसमें कोई सप्लाई इन्वॉल्व है या नहीं है। इफ देर इज नो सप्लाई इन्वॉल्व, तो आपका वो एग्जेम्पशन का क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाएगा। आई हैव गिवन यू 10 लाख रुपीज, मैंने आशा जी को 10 लाख रुपीज दे दिए और मैंने उनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा हूँ, तो जब मैंने पैसा दिया लेकिन उनको उसको रिटर्न नहीं करना, ना ही उनको कोई ऑब्लिगेशन है टू प्रोवाइड एनी सर्विसेज ऑन दैट बिहाफ, तो वो कभी भी टैक्सेबल नहीं होगा, सप्लाई की डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होगा। एंड दैट इज व्हाई वी वर सेइंग कि देयर आर सो मेनी कंपोनेंट which are required to be completed for a supply. There has to be a supplier, there has to be a recipient, and there has to be a consideration. और consideration भी किस लिए होनी चाहिए कि आशा जी तरुण को कुछ सप्लाई करेंगे उस पैसे के बदले, जब वो कुछ भी नहीं है तो वो आउटसाइड जीएसटी चला जाएगा, उस पर कोई टैक्स क्रिएट नहीं होगा। इसका और सिंपल एग्जांपल समझते हैं। एक गिटारिस्ट है, वो एक मार्केट के अंदर गिटार बजा रहा है एंड यू पे हिम से 10 लाख रुपीज और 1 करोड़ रुपीज, आपको बहुत अच्छा लगा, आपने 1 करोड़ रुपए दे दिए, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, बिकॉज उसने तो जनरल कर रहा था एंड यू गेव हिम एज अ रिवॉर्ड और एज अ योर सेटिस्फेक्शन, तो उस पर टैक्स नहीं आएगा। इसी में फर्दर अगर करते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं कई सारी ऐसी एनजीओज हैं जो बहुत ही एक मिनिमम रेट पर फूड डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं, लाइक 5 रुपए 10 रुपए में पूरा थाली एंड ऑल। तो इन दैट केस वो जो अमाउंट रिसीव कर रहे हैं 5 रुपए 10 रुपए पर पर्सन से, तो दैट विल बी टैक्सेबल अगर वो उसका थ्रेशोल्ड से अबव जा रहा है तो। वो अगर चैरिटेबल एक्टिविटीज की डेफिनेशन में क्वालिफाई कर जाएगा तो बच जाएगा, और 90% टाइम वो उसके अंदर एडवांसमेंट स्पिरिचुअलिटी के साथ लिंक करके उसमें इन्वॉल्व कर देगा। ओके। Next is from Shaina Kapoor. Services provided by individual pundits for religious ceremony exempt or not? There is no specific exemption. If the Pandit is charging more than 20 lakh rupees, everything would be chargeable to tax. Then next is Arpan Bansal ji ka hai, can banquet hall given on rent including food? And further kya hai? So, for banquets, 5% without ITC is the only rate applicable. तो वहां पे कोई और ऑप्शन ही नहीं है. It has to be 5% without ITC. Whether donation for building fund specifically taxable? सर, बिल्डिंग फंड के अंदर अगेन इट वुड बी अ थिंग, आप 12AA के अंदर रजिस्टर्ड हो, आई एम एज्यूमिंग यू आर रजिस्टर्ड अंडर 12AA, और आप ये बोलते हो कि इट इज एडवांसमेंट ऑफ माय रिलीजन, तो जब आप रिलीजन में जाओगे तो वो अगेन वहां से बाहर हो जाएगा, क्योंकि जनरली जो स्पेसिफिक डोनेशन होती हैं दोज आर गिवन टू अ रजिस्टर्ड ट्रस्ट विच आर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड, और क्योंकि वो रजिस्टर्ड है और उनका जो पर्पस है वो चैरिटेबल एक्टिविटी में क्वालिफाई कर रहा होता है, तो इट विल बी वेरी वेल कवर्ड। तो एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी और योगा जो सेकंड लिम्ब है चैरिटेबल एक्टिविटी का, दैट इज वेरी वाइड, उसमें इट वुड बी कवर्ड।
So with this we are done with the questions. अभी टाइम है तो हम सुमित जी एक दो क्वेश्चंस वैसे ले सकते हैं अगर कोई ऑडियो ऑन करके यस आशा जी, टाइम तरुण जी इफ यू अलाउ सर अगर यस कोई यस यस क्वेरी मैम। है किसी की तो ले सकते हैं फर्दर, आप डेफिनेटली। हैंड रेस कर सर दीजिए इफ हेलो एनीवन वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन। जी हेलो अर्पण जी प्लीज। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अब 18% मतलब विद आईटीसी जा सकते हैं इन केस ऑफ बैंकेट हॉल में, कि वो 5% नहीं विदाउट आईटीसी जाना पड़ेगा? सर 18% का ऑप्शन नहीं है। ओके, पाँच अनटिल एंड परसेंट अनलेस यू विदाउट। चैलेंज, हाँ अनटिल एंड अनलेस यू चैलेंज दी नोटिफिकेशन की ये नोटिफिकेशन गलत है, यू कैन नॉट गो दैट। और सर अगर 12 AA में रजिस्टर्ड नहीं है, फॉर एग्जांपल गुरुद्वारा किसी कारण से, तो उसको डोनेशन मिल रही है, तो उस पे हमें जीएसटी अभी चार्ज करना पड़ेगा? सर वही तो अभी हमने डिस्कस किया कि आपने डोनेशन के बदले मिल क्या रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो वो हमेशा ही एग्जेम्प्ट रहे। ओके ओके। सप्लाई कंप्लीट होना जरूरी है। सप्लाई का मतलब है पहले तो उसके अंदर तीन चीजें होनी चाहिए, सप्लायर, रेसिपिएंट और सप्लाई। उसके ओके। बाद सप्लाई का मतलब क्या होता है कि मैं आपको पैसे दे रहा हूँ और आप उसके बदले मुझे करके दे रहे हो। आपने दान पात्र में कोई फिगर डाली, आप उससे हम्म। एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे हो, हम्म। और भगवान से चाहे आपकी अगर कोई वो सर चाहे एक्सपेक्टेशन। गुड्स भी दे रहा है कुछ, चाहे एसी दे दिया उसने, चाहे फ्रिज दे दिया, तो उस केस में भी कोई चार्जेस नहीं लगेगा जीएसटी का? फॉर एग्जांपल उसने जब हम डोनेशन के पैसे तौर की पे। बात करते हैं वो हमेशा इन मतलब वेदर इन काइंड हो या इन कैश हो, ओके दोनों कवर्ड ओके, होते हैं। अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक नितिन जी प्लीज आस्क योर जी। क्वेश्चन। या गुड इवनिंग सर। सर गुड मेरा इवनिंग। क्वेश्चन ये था कि जैसे मैं वर्क कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ कि हाँ जी। सपोज मैं दिल्ली में रजिस्टर्ड हूँ और मैं महाराष्ट्र में स्टरलाइट के लिए काम करता हूँ, जो स्टरलाइट रिलायंस के लिए टावर बनाती है और या फिर फाइबर लेइंग करती है। ठीक है। तो उस केस में जो डक्ट है और जो फाइबर है वो मुझे कॉन्ट्रैक्टर वो स्टरलाइट देती है, बट जो सीमेंट और आइटम मुझे परचेज करने पड़ते हैं उसे सिविल काम करने के लिए, वो मैं खुद परचेज करता हूँ। ठीक है। तो इस केस में क्योंकि मेरी सप्लाई जो है वो मैं मुझे लोकली माल परचेज करना पड़ता है, तो मैं महाराष्ट्र बिलिंग कराता हूँ। तो इस केस में क्या मुझे आईजीएसटी बिलिंग करके मैं दिखा सकता हूँ, इनपुट ले सकता हूँ क्या उसका? सर आप बिल टू अपने पास करेंगे, शिप टू जी। कर देंगे जो आपकी साइट है, तो परफेक्ट। आपको महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन की नीड नहीं है। जी। सिर्फ एक अगर बहुत अल्ट्रा टेक्निकल ग्राउंड अगर डिपार्टमेंट पुश करेगा तो रजिस्ट्रेशन के लिए वो बोलेगा कि जब हम प्लेस ऑफ बिजनेस की डेफिनेशन पढ़ते हैं जी। उसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर आप कहीं पे भी अपना माल स्टोर करते हो दैट इज ऑल्सो अ प्लेस विच इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। ओके। तो उस केस के अंदर वो बोलेगा क्योंकि आपने अपना माल यहाँ पे स्टोर कर रखा है तो यू आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। उसको वी थियोरेटिकली बायपास बाय सेइंग दैट कि सर हमने बिल टू शिप टू कराया, जब हमने शिप टू करा दिया नाउ इट इज इन द पोजेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टी, वो जी। कॉन्ट्रैक्टी की ओनरशिप हमारे लिए हो चुकी है, इट इज जस्ट दैट हमने उसको कंज्यूम करना है। तो वहां पे दोनों है, बट 90% केसेस के अंदर आपने अगर सब कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, सिर्फ आप गुड्स प्रोक्योर कर रहे हो, तो आप बिल टू अपने दिल्ली के एड्रेस पे कर दीजिए, शिप टू महाराष्ट्र के एड्रेस पे कर दीजिए, अपने यहाँ से डिलीवरी चालान बना के कॉन्ट्रैक्टी के नाम पे वो गुड्स को ट्रांसफर कर दीजिए, तो आप बिल्कुल सेफ हो जाएंगे। नहीं सर, पर अल्टीमेटली साइट तो मेरे कंट्रोल में ही है। हाँ सर, सी अब उसको उन्होंने। आपको साइट आपके कंट्रोल में है, लेकिन मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि आपने ये बोल दिया कि गुड्स मेरी पोजेशन पे नहीं है या मेरे प्लेस पे नहीं है, गुड्स जो है वो क्लाइंट के प्लेस पे है। बेसिकली डिलीवरी चालान बनाने का पर्पज सिर्फ ये है कि जो गुड्स मैंने सीमेंट स्टील भेजा है वो इज एट द प्लेस ऑफ द क्लाइंट एंड नॉट माय ओन प्लेस, ताकि थ्योरेटिकली भी डिपार्टमेंट ये ना बोले कि आपने यहाँ पे गुड्स स्टोर करे और यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन की ट्रिगर। नहीं, पर सर जैसे सपोज अगर मैं दिल्ली की बात करता हूँ, यूपी की बात करता हूँ, झारखंड की बात करता हूँ, वहां पे जब मैं कहता हूँ तो वो कहते हैं कि यार प्लेस ऑफ सप्लाई आपकी महाराष्ट्र है। हाँ। तो यू शुड टेक द रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र, वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड यू द आईजीएसटी इनपुट। कौन नहीं दे रहा सर? सर देखिए वो ठीक है, मैं जनरली मैं सर बात मैं कह रहा हूँ, पूछ वो रहा हूँ तो। आप जो सर्विसेज ले रहे हो वो गुड्स की ले रहे हो या सर्विसेज ले रहे हो, मैं सर परचेज क्या दोनों कर ले रहे रहा हूँ, मैं तो उनके लिए से मैं उनके हो? लिए कोई टेलीफोन का टावर बना रहा हूँ सर। मैं उनका एक टेलीफोन का टावर 20 लाख रुपए का बनता है। तो जो ठीक भी है। स्टील सीमेंट और जो भी अदर आइटम्स हैं वो मुझे हम्म। साइट पे परचेज करने पड़ते हैं, और ठीक है। लोकली परचेज करने पड़ते हैं, और मैं उन्हें इंस्टॉल करता हूँ वहां पे।
ठीक है। जब तक मैं उसकी डिलीवरी नहीं दूंगा, वो जो साइट होती है वो मेरे पोजेशन में होती है। अगर सपोज कोई वहाँ हम्म, चोरी होती, कोई भी लॉस होता है, देन आई एम लाइबल फॉर दैट लॉसेस। ठीक है सर। तो उस तो केस में अब सर, जब आप, मैं बिल टू, सर आपको मना नमस्कार कौन कर रहा नमस्कार है कि तरुण मैं, जी। सर एक मिनट पहले नितिन जी की कंप्लीट कर लेते हैं। तो सर इसमें आपको कौन सा गुड्स का सप्लायर बोल रहा है कि वो बिल टू शिप टू करके आपको दिल्ली में क्रेडिट नहीं देगा? नहीं सप्लायर नहीं बोल रहा है। मैं कह रहा हूँ सर, क्योंकि मैं भी जब उसकी बिलिंग करूंगा स्टरलाइट को, तो मैं भी आईजीएसटी लगा के बिलिंग कर सकता हूँ। हाँ जी। सर एक बार रिपीट करना, मिस हुआ। सर सर देखिए, जब मैंने अपना माल परचेज किया, गुड्स परचेज किए और सर्विस प्रोवाइड की फॉर द हाँ इरेक्शन जी। ऑफ द टावर, तो जो भी मैं महाराष्ट्र से बिल करूंगा, बिल कराऊंगा अपने लिए, बिल टू शिप टू कराऊंगा, और वो आईजीएसटी चार्ज करेगा मेरे से, जो मेरे लोकल हाँ जी। सप्लायर है। राइट सर। हाँ जी। अब जब मैं हाँ उसे जी। सर्विस प्रोवाइड करूंगा, जब स्टरलाइट को बिल करूंगा फाइनल प्रोडक्ट की, तो भी मैं हाँ आईजीएसटी जी। चार्ज करूंगा। बिल्कुल ठीक। उस केस पे सर। सर आपका पहला आईजीएसटी चार्ज होके दिल्ली में आया, आपने जी दिल्ली में आईटीसी ले लिया, फिर जी दिल्ली से आपने आईजीएसटी उठा के महाराष्ट्र भेज दिया। यानी जी टैक्स जो ट्रेवल कर रहा है ना, जैसे जैसे इनवॉइस जा रहा है, ऐसा थोड़ी ना कि कहीं पे रुक रहा है। या आईजीएसटी आईजीएसटी नहीं है, आप आईजीएसटी के साथ प्लेस ऑफ सप्लाई देखो। पहले वो टैक्स उठ के दिल्ली आया जब बिल टू शिफ्ट हुआ, फिर आपने जी। जब काम यहाँ पे कंप्लीट कर दिया तो दिल्ली से उठा के वापसी महाराष्ट्र भेज दिया जहाँ पे एक्चुअल साइट चल रही थी। तो जी प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? ठीक है सर। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं सर, अगर थैंक किसी यू। का है तो। यस आशा जी, लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, देन मैं विजय सर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि लास्ट में कुछ। तो बीच में अभी किसी का एक्चुअली हुआ था, कोई क्वेश्चन पूछने जा रहा था आई थिंक। विजय सर, यू वांट टू से, यू वांट टू ऐड, यू वांट टू। Yes, नमस्कार तरुण जी। इस नाइस। सर यू आर नॉट नमस्कार सर। विजिबल, आपका वीडियो ऑन नहीं है विजय सर। बट ऑडियो वाज कमिंग ओनली। और कोई क्वेरी नहीं है आशा जी? नहीं, ऑल क्वेश्चंस हेलो आर सर। आंसर्ड। तरुण जी, आई एम विजय कुमार सुब्रमण्यन फ्रॉम तमिलनाडु जी। नमस्कार सर, आफ्टर अ वेरी हाउ लॉन्ग आर यू टाइम। जी? हाउ आर यू? वेरी गुड सर। It is my pleasure to meet you in the platform that after a long time I am meeting you in a webinar. यस, आई I वाज missed a lot. बिल्कुल। Okay, thank you. It's a wonderful session, Jay. I enjoyed. So thank you so much of giving this opportunity to meet you and to have a video for 2 hours, Ji. Thank you so much. थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you, Sumit Ji, थैंक Asha यू। Ji. Thank you so much. थैंक यू फॉर जॉइनिंग सर, हेलो इट्स अ प्लेजर। Definitely, थैंक definitely. Thank you. सर, एक और क्वेश्चन है। हेलो हाँ यू। जी, यस। हाँ जी। सर, इन केस जैसे होटल है तो 5,000 रुपए के मतलब कम ही मेरे सारे रूम्स हैं, तो उसमें मैं एक तो 12% विद आईटीसी चल रहा हूँ, और बाकी जो मैं रेस्टोरेंट में, जैसे रेस्टोरेंट तो है ही नहीं है वैसे, कमरों में फूड डिलीवर कर रहा हूँ, तो उस हम्म। केस में मैं 5% विदाउट आईटीसी, और जो बैंक्वेट हॉल में है 5% विदाउट आईटीसी लेके चल रहा हम्म। हूँ। और हाँ जो जी। आईटीसी मेरे को आ रहा है, जैसे रेंटल का आईटीसी आ रहा है, तो उसको मेरे को वो बाइफरकेट करके सेल के हिसाब से उसको मतलब ब्लॉक क्रेडिट में डालना होगा एवरी मंथ। यही हाँ। प्रोसेस फॉलो करना होगा ना सर? हाँ जी। ये इसमें कुछ चेंज है? सर यही प्रोसेस है, इसमें एक आपके पास ऑप्शन आया था, वो विंडो बंद जी होगी, अगले साल फिर से खुलेगी, जिसमें आप अपने आप को स्पेसिफाइड प्रेमाइसेस बना सकते हो। आप पूरे के ऊपर ओके। 5% दे देंगे तो आपको क्रेडिट मिल जाएगा उसमें, लेकिन केटरिंग नहीं आएगा, रेस्टोरेंट ही आएगा। तो वो सॉरी, उस पे रेस्टोरेंट वाले को आप टैक्सेबल बना के उस पे टैक्स पे कर देंगे और आपको पूरा आईटीसी मिल जाएगा। लेकिन इस साल के नहीं लिए सर, आपको, 5, अच्छा नहीं, ओनली 5% तक मेरे को भरना पड़ेगा और मैं नहीं आईटीसी भी ले सकता हूँ? नहीं नहीं सर, 5% नहीं होगा, वो मैं वही बोल रहा हूँ कि आपको पूरे रेट पे टैक्स देना होगा और आपको आईटीसी मिल जाएगा। मतलब वो 5% मेरे मुंह से स्लिप ऑफ सॉरी टंग सर। था, वो नहीं। हेलो हाँ जी। सर, दोबारा बताना सर, आवाज कट गई थी आपकी, बीच में डिस्कनेक्ट सर हो मैं गई थी। ये कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने इस साल से एक ऑप्शन दे दिया है कि कोई भी जी होटल वाला, क्योंकि अब उसको पूरी वैल्यू पे टैक्स तो देना ही पड़ता है, जी जी उसके सर। बाद रेस्टोरेंट सर्विसेज है, जिसकी वजह से उसके पास टैक्सेबल सप्लाईज भी आ रही थी, एग्जेम्प्ट सप्लाईज भी आ रही थी। तो ये जी इशू उनके जी पास किया कि सर यहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है,
तो गिव अस एन हम्म, ऑप्शन जहाँ पे हम अपने आप को बोलेंगे सर हमें फुल रेट पे टैग देना है और हमें रेस्टोरेंट का आईटीसी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने बिल्कुल। अलाउ कर दिया कि भाई आप अपने फॉर्म्स फाइल कर दीजिए, इंटीमेशन फाइल कर दीजिए, एंड यू कैन कन्वर्ट दैट एंड यू कैन डू दैट। उसकी टाइम लिमिट ऑलरेडी खत्म ओके। हो चुकी है। आप नेक्स्ट ईयर में दोबारा ठीक उसको है। कर सकते हैं, बट इस साल आपको पे करना पड़ेगा रिवर्सल, यानी आपको अपने आईटीसी ओके। रिवर्स करने पड़ेंगे। नेक्स्ट ईयर में आप उसको पहले फाइल कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा। ओके, मतलब इस साल से तो हमें वैसे ही फॉलो करना पड़ेगा, उसको ब्लॉक क्रेडिट में डाल के 5% विदाउट आईटी चलना पड़ेगा, और उसको वो 12% के हिसाब से चलना पड़ेगा, जो हाँ होटल का जी। रेट होगा एज पर। यस। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है सुमित जी, अब सर, क्वेश्चंस भी हो गए हैं, तो राइट। कैन प्रोसीड फॉर सुमित जी, क्वेश्चन। सॉरी, डोंट माइंड, आई एम टू लेट। यस कौशिक जी। Yeah, sorry. So basically, the taxpayer is based out of Bangalore, basically Karnataka. He does some work in Kerala. Okay, this is more towards immovable property. Like if the contract value is totally of 100 rupees, 20-30 rupees is more towards civil work. Basically, somewhere like एक तो wall construct करना है, basically cement payment वो सब लगेगा. बाकी 80 rupees is more towards, you can say it's pertaining towards interior work. जैसे पीओपी है या नहीं तो फर्नीचर बनाना है. Now, if the supply is related to immovable property, then is he required to take like a local registration in that particular state and get the work done, then issue a CGST, SGST bill only, or he can do IGST? The law says that he'll have to take a local registration only, but considering इधर 100 रुपए के पूरे कॉन्ट्रैक्ट में उसका 20 रुपए ही है जो which is pertaining to the towards the civil work. बाकी it's more about interior work. सर लॉ में कहीं पे भी ये नहीं लिखा, देर इज नो स्पेसिफिक बाइफर्केशन दैट यू हैव टू रजिस्टर और यू डू नॉट हैव टू रजिस्टर। if Hmm. you are able to provide the services from your own state or the home state and there Hmm. is no loss of ITC, I'm assuming there is no loss of ITC, then there is no restriction in the law restricting you not to charge IGST. So you can Okay. stay in your state and charge IGST with place of supply as Tamil Nadu. The matter is closed. The only issue is that if you are availing certain services, then the credit will not be eligible. So because of that credit eligibility, it becomes a practical issue कि I have to take the registration. But if you are not availing any services, you are executing the services purely on your own self and you are only procuring goods, तो आप bill to ship to करके वो transaction को complete कर सकते हो। ठीक है. But if it's related to immobile, they talk about कि local registration लेना पड़ता है because place of supply हाँ becomes that particular state only. सर, section 22, 23, 24 deals with registration of a taxpayer. Hmm. Place of supply, section 10, 11, 12, 13 of the IGST Act tell what is the place of supply. And the relevance of place of supply has nothing to do with registration. Place of supply तो सिर्फ ये बताता है कि इस ट्रांजेक्शन का जो कंजम्पशन है वो लॉ ने कहाँ पे डीम कर दिया, कहाँ Hmm. पे वो स्टेट कौन सी है जिसको टैक्स मिलना है, उसका रजिस्ट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। तो व्हेन वी से दैट द प्लेस ऑफ सप्लाई इज हरियाणा, प्लेस ऑफ सप्लाई इज तमिलनाडु, इट मींस that the 50% portion of that tax will go to the specific state. Correct. That is the only relevance of POS. उसके अलावा लॉ में कहीं नहीं है कि POS पे लेना है। अगर ये Hmm. होता तो सर लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं होना चाहिए था। We have Correct. two separate Correct. concepts. One is location of supplier, second is place of supply. If Hmm. both are in the same state, it is CGST, SGST. If they are in the separate state, it is IGST. Law ने बहुत Correct. अच्छे से लिखा है कि location of supplier is not equal to place of supply and it is not required to be registered also. Otherwise तो IGST का concept works contract में हटा ही देते हैं। Correct. Yeah, right. Okay. Hmm. Uh, Understood, sir. Thank you, Tarun ji. Thank you. Thank you, Now, sir. Sumit ji, over to you. All questions have been answered. और आज हमारा लास्ट सेशन भी था इस सीरीज का, जीएसटी महाकुंभ. So now, थैंक यू आशा जी, एंड स्पेशल थैंक्स टू तरुण भाई फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम. और जो फीडबैक देख रहा हूँ कि वंडरफुल, मार्वलस. सो हेड्स ऑफ टू यू तरुण भाई फॉर योर डिलीवरेशन एंड गिविंग टाइम एज ऑलवेज. यू confirm your presence by single call. So special thanks to you. And all 4 sessions recording and presentation will be shared at our Team Casa channel. Earlier 3 was there, and today's session will share soon. So thanks to each participant, and further 2 3 more sessions we will plan later this month, whenever topic will be finalized on this is industry specific.
So thanks to each participant for making this program a successful series. And Tarunji, you want to conclude anything by saying? So, sir, I would say that after a very long time, I was taking a webinar and I was not Yeah. up to the mark myself, And or I was not up to the mark as per my a standards. wonderful But We webinar it didn't was. feel so, तरुण जी हमें ऐसा नहीं लगा बिल्कुल भी. नहीं, ऐसा नहीं लगा। और स्पेशल एक फिजिकल मीट भी प्लान करते हैं जुलाई में। आशा जी हम लोग इस पर डिस्कस Yes. करके एक फिजिकल मीट Yes. भी प्लान करते हैं जल्दी। तो विद दिस Sumit ji, यस Sumit ji, यस सर sir, please post today's presentation, Tarun ji's presentation ji. यस सर वेरी सुन सर बाय नाइट Yes, यू विल गेट रिकॉर्डिंग एंड प्रेजेंटेशन बोथ। because it is an important sector today he has covered. So please post it tomorrow. Okay, श्योर okay, श्योर okay. श्योर सर Thank श्योर you, सर thank you, thank you, thank you. थैंक यू तरुण भाई वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम Okay. appreciation thanks to Thank all you. Thank you. of you. Thank you.